Sato Ma Sadgamaya Tamaso Ma Jyotirgamaya Mrityorma Amritangamaya Shanti Shanti Shanti. Hari Om Tat Sat. Yesterday evening, we talked of the two entities in the human being. One is the human aspect, and the second, the being aspect. These two entities combinedly becomes human being. If we only know the human, then we are in an ignorant state. Human is only a physical form, like an animal, a dog, a donkey, a horse, a bird, a fish. Likewise, we are possessing a human body. So human is just the physical matter. The being is the conscious matter in the human. Being runs the human. It is not that the human runs the being. And our life objective is to find out, realize that being in the human. Once we realize that, we become complete human being. In this prayer, we pray to the Divine Mother that please take me from the unreal to the real, from the darkness of ignorance to the light of knowledge, and from death to eternity. I had explained that everything which is seen here, everything which we experience in this world through the five senses are unreal. Now, does unreal means that they don't exist? If I say this body is unreal, does it mean it doesn't exist? If I say this building is unreal, does it mean it doesn't exist? If I say that tree is unreal, that car is unreal, does it mean it doesn't exist? Or it may also mean that it exists, but to us it doesn't appear the way it exists. In its real sense, it doesn't appear to us. What we see and perceive is not the reality, even though it exists. But it exists in a modified form of something else. Then that becomes real. The source becomes real. This building doesn't become real. Like, if we take an example of a car. What is a car? Does anything exist as car? In my opinion, nothing exists as car. A car is a name given to
some assembled parts. As such, car doesn't exist. If we take a car and remove the wheels, and if I ask you, are these wheels the car? You will say, no, it's not the car, it's only wheels. If I ask you the steering, is the steering the car? You will say, no, steering is not the car. So I remove the steering. If I ask you, is the engine the car? You'll say, no, engine is not the car. So if I remove the engine. If I ask you the seat, is the seat the car? You'll say, no, seat is the seat, it's not the car. So we remove the seat. I remove the doors, windows. I take away the body of the car. Where is the car? There's no car. Assembled parts, and in a given shape, we gave a name to it that this is the car. Enlightenment is seeing the car not as the car, seeing the car as assembled product, assembled object of various objects. Assembling various objects and creating one single object, a new name has been given to that as car. But in reality, there's no car. Car doesn't exist. Similarly, if I ask you who you are, people will say that I am so and so. He will say, I am ready. If I ask the next question, are you Mr. Reddy or it's your name? He will say, he will think for a minute and then say, yes, I think I am not ready, but my name is ready. When you say my name is ready, it would mean that you are some other entity who is calling this as mine now. In ignorance, he was saying, I am ready. I am ready. When I asked, are you ready? Or it's your name? Now he says, yes, it's my name. My name is ready. When you say my name is ready, then you are separating ready from yourself. Now you are another entity. Now if I ask him, now who you are? I have removed the name. I ask him, who are you? He will say, I am this, what is appearing to you. I am this physical body. Now I'll ask him, does this hand, are you the hand? He'll say, no, hand is mine. When he says, hand is mine, I am not the hand, then I'll remove the hand, keep it aside. This hand, yeah, this hand also is mine. Are you the hand? No, I am not the hand. It's my hand. So we remove the hand. This is how spiritual masters gave enlightenment to spiritual aspirants. So spiritual master asks, now are these legs yours or you are the legs? He will say, they are my legs. So remove your legs. Legs are removed. The head, are you the head? No, I think it's my head. So you are identifying yourself with some other entity who is calling that it is my head. Remove the head. Remove this body. Now who are you? You are not the hands, you are not the legs, you are not the head, you are not the chest, you are not the abdomen. You were saying before that, I am so and so. Now you are saying they are mine. Now when you are saying they are mine, then who's that entity who's saying it's mine? Maybe he'll say that I am the mind. So when he asks, are you the mind or it's your mind? Because sometimes when his mind is upset,
He'll come and say, Guruji, my mind is upset. When you say, my mind is upset, Guruji, my mind gets irritated, which means that you are not the mind also. There is another entity who's saying that it's my mind. He is not the body, he is not Mr. Reddy, he is not the mind. Who's that entity who's saying that it's my mind? My mind is getting irritated. That entity who's saying that my mind, my body, my name is the being, is the real being, is that self, it's the consciousness. That real being is saying that my mind, my senses, my head, my legs, my hand, my body. That is called enlightenment. When you establish yourself in that entity who is saying that this is mine, this is mine, this is mine, you become enlightened. Till you feel that you are this physical body, till you are identifying yourself with some name, then you are living in an ignorant world. You are living in ignorance. And if you live in ignorance, there will be always peaks of pleasures, pains, happiness, sorrow. In ignorance, there will be peaks of pleasures and pains, happiness and sorrow. But in the self, there are no peaks and pains because there are no forms, there are no entities. Everything becomes one. Everyone becomes the self. Everything becomes consciousness. Even though different forms are appearing to us, we know that the reality is not the form. It is the formless behind the form. Until we make our mind still, as I said yesterday, until we make our mind still, this self is not able to reflect itself into the mind. There are 4 states of human beings. Like there are 4 states of a vehicle, a car. Now if you take the example of a car, there are 2 aspects. There's an engine and there is a body. A vehicle, a car has an engine and a body. There are 4 states of a car. One state is engine is off, body is still standing in the garage. No fuel consumption, no movement. Second stage, engine is on, body is still. If you switch on the engine of the car, but keep the car stand still, it will consume fuel. So second stage is engine is on, body is still. Third stage, engine is on, the car also is moving. There's a movement and there's a fuel consumption. Fourth stage, car is moving, but engine is off. There's no fuel consumption, but car is moving. When there's a slope, the car is moving and you can switch off the engine. Likewise, in the human beings also there are 4 states. One, we are in an unconscious state. Neither body is moving nor the mind is thinking. You are in unconscious state. Second stage, engine is on, body is not moving. You are sitting at some place, but your mind is active. Mind is thinking, drifting.
Mind is consuming energy. There are people who work in the office 8 hours, 10 hours. There is no movement at all in the office, no physical movement. The body doesn't move. Morning they go and sit on their desk, and evening they come out from their desk. But by the time they go home, they are completely drained out. When the body is not moved, yet why they feel drained out? Because the mind has consumed the energy. In the third stage, my body is moving, mind also is moving. In the fourth stage, the body is moving, but mind is not switched on. Mind is switched off. Mind doesn't work. There are no thoughts in the mind, but body is moving. This is the highest state of human being. This is what we want to achieve. Let the body move. Let the body go wherever it wants to go. Let mind not go anywhere. Let mind remain peaceful. Let the mind remain calm, thoughtless. This should be our ultimate objective. And this is what the state becomes when you get enlightened. There's one story in scriptures, Indian scriptures, about Shvetaketu. There was a small boy, 12 years old. He used to live with his parents in a village. No school, no studies. At the age of 12 years, Shvetaketu's father, he asked Shvetaketu that, why don't you go to the Gurukul? In olden days in the village, there used to be Gurukul, where gurus would teach the scriptures. There's no pattern of education like what it is today. So he was sent to the Gurukul to study scriptures, Vedas. He went, it would take 12 years to study all the Vedas. So when he came back, he was 24 years. He came back very proudly. Having learned all the 4 Vedas, all the scriptures, he came back with a lot of pride. Because knowledge creates false pride. Lot of knowledge creates ego. He came back with ego, that now I know everything. So he came to father and said, Father, I have finished my studies. I have learned all the scriptures. His father said, is it so? He said, yes, ask me anything. So father asked, has your master told you about that? If he is known, if that being is known, then everything gets known. Has your master told you about that being? By knowing only that being, everything gets known. He said, what is that being? By knowing that being, everything gets known? No, my master has not told that. By perceiving that one alone reality, everything can be perceived. Do you know that? He said, no. By hearing about that one entity, you can hear everything. Has your master told about you? He said, no, I don't know that. He said, you go back and learn all these things. He went to the master, he asked the same questions. Master said, even I don't know all that. He came back to the father. He said, Father, what is that? I have learnt all the 4 Vedas, 12 years, scriptures, study, but I don't know what you are talking about. By knowing one thing, how can we know everything? He says, son, if you know the clay, if you know the nature of the clay, you will know everything made of that clay.
You will know the nature of the pot. You will know that horse made of clay. You will know all the toys made of clay. Everything which is made of clay will be known if you know the clay. If you know the gold, if you know the gold nuggets and its nature, then everything made of gold will be known to you. You don't have to individually know as to what is the necklace, what is earring, what is the finger ring. You don't have to know everything. You don't have to know the bangles. If you know gold and the nature of the gold, automatically you know everything made of that gold. Likewise, that Supreme Being, if you know that Supreme Being, automatically you get to know the whole universe, because the whole universe is nothing but the modified form of that Divine Being. The whole universe is the modified form of that pure consciousness. If you know that consciousness, if you know that being, everything gets known. Shvetaketu was amazed. He says, please reveal me some more as to what is this. Why I have spent 12 years studying scriptures, and at the end of 12 years, at the end of studying scriptures, even I don't know this simple secret of this creation. Please, Father, please reveal to me. So Father said that before the creation, before universe came into existence, that being alone existed. That being is nothing but the formless, pure consciousness, omnipresent, omnipotent. It is present everywhere. And a thought arose in the pure consciousness that let me become from one to many. So the universe came into existence. And even after the universe came into existence, that pure consciousness continues to remain in its formless state everywhere. He says, Father, how it could be? If it is there everywhere, in the formless state, why can't we see it? You are saying it is there everywhere. Why can't we see it? So Father asked Shvetaketu to bring some salt. Shvetaketu brought some salt. He was asked to put that salt in the water, mixed. And the Father asked, how does it look? He said, looks like water. Any difference? He said, no, it looks like plain water. So the Father asked him, you take a spoon and drink water from the top layer. He took some water from the top layer and drank. He said, how does it taste? He said, it tastes salty. Okay, take some water from the middle layer. He took some water from the middle layer. Father asked, how does it taste? He said, tastes salty. Take some water from the bottom layer. How does it taste? He said, it tastes the same, salty. So it's a son. Even though the salt exists in this water, it doesn't appear to us. But if it doesn't appear to us, doesn't mean that that salt doesn't exist. It could be perceived by the taste sense. The salt exists in the water, but doesn't appear to you. And if something doesn't appear to you, doesn't mean it doesn't exist. Now in this plain water also there are millions of bacteria. If we look at the water, you can't see a single bacteria in it. If we can't see a single bacteria in it, does it mean that there are no bacteria in it? If you want to see bacteria in water,
You have to either use a microscope, you have to see through the microscope, and then you can see the bacteria in the water. Our eyes cannot see those bacteria because they are not within the range of the ability of our eyesight. If something is not within the range of our eyesight, it doesn't mean that doesn't exist. Similarly, that being, that pure consciousness, even though exists everywhere, but through your eyesight you cannot see it, but you can experience it. The way salt was experienced, in the same way, that supreme divine being who exists everywhere could be experienced. Shvetaketu asked, how do I experience it? Father said, there is a salt in this water. If you want to separate the salt, what do you do? He said, if we heat this water, if we heat the water, water will get evaporated. And then what remains is the salt. So Father said, in the same manner, you have to heat in meditation your mind, your senses, your intellect, your ego. Through the fire of meditation, when you heat your mind, intellect, ego, senses, then all the desires, mental conditions, they will evaporate. In the fire of meditation, they will all evaporate. And then what would be left over is the Supreme Divine Being. Every day morning we have meditation sessions, and people have experienced that being. They have experienced the separation from the physical body very clearly, and having got separated, they have started witnessing their own physical body as a separate entity. Earlier, it was one single entity like water and salt. Now, when they could separate through the fire of meditation, now they have realized that, oh my God, I am not the physical body. I am another pure entity using the physical body as a vehicle. But the vehicle is not me. If you drive a vehicle from Delhi to Rishikesh, if you come, you have used a vehicle. You are not the vehicle. Likewise, we are using this vehicle. Ignorantly, we have considered the vehicle as ourselves and got caught into the illusion, into the maya of this world. If you have to get enlightened, if you want to experience your own self, that pure consciousness, through the fire of meditation and through the power of discrimination, these two are supreme methods to get enlightened. Keep meditating and keep offering your senses, ego, intellect, everything in the fire of meditation. You will slowly realize your own entity. Or through the power of discrimination, which I revealed just now, is the hand yours or you're the hand? No, I am not the hand. Hand is mine. So you're an entity other than the hand. Your entity other than the physical body. Your entity other than the mind. Through this power of discrimination also, you will reach that source. There are three stages of enlightenment or our existence.
One, pre-enlightened state. Second, enlightened state. Third, post-enlightened state. How many colors we see in the universe? Generally, we perceive 7 colors. As human beings, we know there are 7 colors. How real is this? How real is this fact that there are only 7 colors? Just because we perceive 7 colors, are there only 7 colors? There could be 14 colors. There could be 40 colors. What we see as red, what we see as green, what we see as yellow, is it really red? Is it really green? Is it really yellow? If it is so, then to every being, not human beings, all other beings, if red is red, then a dog should also see red as red. A bird should see red as red. A fish should see red as red. If red is reality, but it is not so. What we see as red, a dog doesn't see it as red. In fact, it seems dog cannot see any colors. They cannot distinguish between different colors. In France, you have bullfight. France, Spain, the famous bullfight. They show the red cloth to agitate the bull. Is the bull sees red color in that red cloth? No. Bull doesn't see it as red color. Like in the olden days, we used to have those negative reel, negative film in the camera. Bull sees that red color as the negative film. If you remember those good olden days when we used to click pictures through the camera and you get negative film and then exposed to positive colored film, colored pictures. If you see your own picture in that negative film, you will start hating yourself because you look so bad. You get agitated. Is it me in that black and white or negative film? The bull gets agitated not because of the red color, because it sees something like the negative film and it gets agitated. So here the reality, what we perceive is not the reality. What we see as red is not red. What we see yellow is not yellow to every being, which means what we perceive is not the reality. We are not perceiving the reality. We are perceiving what this human body is able to perceive. As I say, if you cannot see bacteria in the water, it doesn't mean that there are no bacteria in the water. Likewise, the red color is not the red in reality. There is something else. Now go back to the source. What is the source of these colors? The reality is not the red is red or green is green or yellow is green, yellow is yellow. The reality is no colors exist in this universe. That is the reality. There are no colors which exist. That is the reality. To different beings, different colors are perceived, but they are not real.
If you want to experiment this to prove my point, you can take a prism, a glass prism. And from one side, you can take a torch and pass torch white light through the prism. What will appear on the opposite side? 7 colors. In reality, they are not 7 colors. They are 7 waves. Through the prism, when one light was passed, on the other side, the same light came out in different frequencies, waves. Those different frequencies, the waves of light, our brain perceived them as some color. It is the perception of our brain that is seeing some color in those waves. But in reality, there are no colors. How there are no colors? To prove that point, you can put another prism on the other side where these 7 colors are visible. Put the prism in an opposite direction. One prism, you pass torchlight, you will see 7 colors. Take another prism in the opposite direction. When the 7 colors pass through that prism, they'll come out as one single color. So the reality is this: one white light and the white light on the other side. In between is not the reality. So what we see in the universe, the variety in universe is getting projected through the prism of our mind. One pure consciousness got projected through our mind. Mind acts as a prism and the mind reflects variety of things. It is not reflecting the same thing, the same source, the same light, the same consciousness. From the behind of the mind, pure consciousness is passing through the mind. After the mind, there are variety gets projected. So what we perceive it as variety is in reality not the variety, but it is only pure consciousness in a modified form being perceived by our senses as different objects, different bodies, different beings, different kinds of subjects. The reality is just one pure consciousness. In the whole universe, nothing exists other than that one single consciousness. Every one of us, every being, every animal, every bird, every building, every flower, every plant, every tree, the clouds, the water, the mountains, they are just being perceived by our mind as different objects, but they are not different objects. The mountains and you, the river and you, this physical body and that physical body, they are all one single block of consciousness. One single block of consciousness. There is no two. There are no two things or many things in this creation. They just appear to be many as to our eyes 7 colors appear, even though there are no 7 colors. There's only one color. But our eyes will see them as 7 colors. Likewise, in the whole universe, it is just one single block of consciousness and nothing else. The moment we start perceiving this, you become enlightened. You are the Buddha. You start seeing that consciousness in every being. You start seeing the consciousness in the building. You start seeing the consciousness in the cloud. You start seeing the same consciousness in the tree, in the river, and you don't see anything else.
you are enlightened. You only have to change our perception. So the ignorant stage is seeing the variety of lights, 7 lights in the creation, which means the variety in the creation, when it is seen differently in variety, is the ignorant state. When you go back to the source and see one single light as the source of 7 lights, and you realize the reality of the 7 lights as one light, you become enlightened. And post-enlightenment, you live in the world, you enjoy the world, but perceive the whole world as the modified form of consciousness, and nothing other than consciousness is post-enlightenment. Pre-enlightenment, see different things as different. In enlightenment, you have withdrawn yourself from the whole universe, from the world, and you realize the source. Post-enlightenment, you see everything as yourself. You are the consciousness, everything else is the consciousness, every object is the consciousness, and you become the consciousness. You start behaving, acting, talking like the pure consciousness. The change in perception is the change in enlightenment. Enlightenment doesn't mean that you will start flying. Enlightenment doesn't mean that you will do something and then there will be a gold chain in your hands. Enlightenment doesn't mean you will disappear here and appear yourself somewhere else. Enlightenment doesn't mean that. Enlightenment means change in perception. You start perceiving the variety as one. The whole universe becomes one. And ignorance is to see that one as many. So when we see that one as many, we are in illusion. When you start seeing the many as one, you are enlightened. This is the only difference. There's another simple example I can right now give you. What is this? A piece of paper? Just a piece of paper? Many people would know what I'm making. Probably in your childhood you did this. I do it every day for my grandchild. I delude him. What is this? What is this? Plane? Plane? Hey. He is enlightened. This guy attends my sessions every day in Hyderabad. That is why he said paper plane. It is paper, it remains paper. There is no change in the basic material. Why do you call a plane and get deluded? Is it not paper? Is it not paper? The paper has become plain. Now you are not seeing the paper in it. You are seeing the plane. When you see the plane, you are deluded. It's the Maya. And when you start seeing in that plane only paper and nothing else, you are enlightened. So simple. What has undergone change in this? I have not added any other element. I have not added any substance in it. I have not removed any substance from it. I have not removed any element from it. Yet, if you ask anybody, they'll say, yes, it's a plane. Even if you say it's a paper plane, yet some delusion,
If you start seeing only paper in it, you are liberated. Your salvation has taken place. You are mukt, you are moksha, you are enlightened. You take for an example milk. Set the milk and you call it curd or yogurt. Just set the milk, you call it curd, yogurt. Churn the yogurt, then there are two entities get created, butter, buttermilk. Heat the butter, it becomes ghee. Now there are so many entities got created. Milk, curd, butter, buttermilk, ghee. If you see curd as curd, if you see butter as butter, if you see ghee as ghee, if you see buttermilk as buttermilk, you are into Maya, you are into delusion. What is the difference? Is curd, does it have any separate entity other than the milk? Is it separate from milk? Is the curd separate from milk? Is butter separate from milk? Is buttermilk separate from milk? Is ghee separate from milk? An enlightened being will see milk, curd, butter, buttermilk, ghee as only milk. He is enlightened. An ignorant person will say, oh, this is ghee, this is butter, this is curd, this is milk. Change in perception. You want to get enlightened, you just have to change your perception. The universe, before it came into existence, as I said, there was only pure consciousness existed. Like the milk became butter, like from butter you could get, from milk it became curd or yogurt, from yogurt you got butter, butter became ghee. Likewise, the way this milk got modified, in the same way, before the universe came into existence, that pure consciousness existed. Slowly some modification took place in the pure consciousness. The ether element came out. From ether element, air element came out. From air element, fire element came out. There's no new element coming out. There's only some modification taking place in that pure consciousness. Pure consciousness has become ether. Ether has become air. Air has become fire. The way milk has become curd, curd has become butter, butter has become ghee. In the same way that pure consciousness became earth, fire, air, water, ether. So we call them by different names as 5 elements. Then these 5 elements came into contact with each other, and in different proportions, when they got combined, somewhere the earth got formed. When the fire element and earth element came together, the sun got formed. Predominantly, when the water element came into contact with all the 5 elements, but predominantly water element, it became a river. Some became trees. Everything in this universe is the combination of these 5 elements in different proportions. But in everything, all the 5 elements exist. In the mountains, 5 elements exist. In the sun, 5 elements exist.
In the Ganga river, 5 elements exist. In the air also 5 elements exist. The only difference is the different proportions. In the air, predominantly the air element exists. All other 4 elements exist, but in very small proportion. Even the earth element exists in air. Fire element exists in air. Water element exists in air. But they are so insignificant, such a small portion that they are not visible or perceived. So the whole universe is nothing but the combination of 5 elements. And these 5 elements are nothing but the modified form of the pure consciousness, which in Hindi scriptures, in Indian scriptures, we call as Brahman. So all the physical bodies, all the physical matter is made up of 5 elements. 5 elements are nothing but the modified form of pure consciousness. So all this which exists is what in reality? Only that pure consciousness in modified form. You start seeing this perception in the universe, you are called an enlightened being. You become the Buddha. Seeing the oneness in variety is enlightenment. Seeing that one as many is delusion, is non-enlightened state. The only difference is between these two. If you live ignorantly in the world, then you will go through the peaks of pains and pleasures, happiness and sorrow. If you perceive the whole universe as pure consciousness, as that being alone and nothing else, you're always in a blissful mode. Because this entity of pure consciousness is permanent, it never changes. Everything else undergoes modification and changes, but as pure consciousness, it is pure always. When it is pure and it doesn't change, it always gives you bliss. And if the mind is established in this fact, mind also becomes peaceful all the time. Even though the changes and variety are seen and perceived in the world, yet mind just sees the play of that divine being in everything. Not as individuals play, but the play of the divine being. So it doesn't get affected by these changes in the world. The simple and the simplest form of achieving enlightenment is this: to change your perception. Start seeing everything as one single block of consciousness. Start seeing every being as the modified form of that being. Start seeing every object as the modified form of that pure consciousness. You will live an enlightened life, and the whole life will be blissful. Thank you very much for being here. If anyone has any questions, probably we can spend some 5-10 minutes. I'll invite Guruma to sing our Purnananda anthem. Or she can sing from there or here. This whole knowledge is in that anthem which we sing after every session. Any questions anybody has? Questions? Okay, ready here.
we have experienced many times in our life. Whenever we went to the ultimate spiritual subject, the depth of the subject, whenever we talked of the ultimate enlightenment, and whenever couple of people understood that enlightenment and probably experienced the glimpses of that enlightenment, the weather changes. Not once, many times in my life I have experienced this. The whole weather, I have seen temperatures of 45 degrees, 50 degrees, and sitting with our Guru. And when the subject went to its peak, at the peak, neither he existed nor we existed. We both did not exist, though physically we were present there, but there were moments where we didn't exist. We didn't feel the heat of 45 degrees temperature. And when that subject went to the peak and the enlightenment was revealed, and that when enlightenment was experienced in the initial stages, the glimpses of enlightenment was experienced, suddenly there were black clouds all over the sky. In the daytime I'm talking, in the afternoon, 3 o'clock, and it rained heavily. And those were summer days. In the summer, Hyderabad, it never rains. Just the climate changed. The intensity of enlightenment is such. When there are so many people who have heard about enlightenment, there are so many people who have got the glimpses of enlightenment, so many people perceive that enlightened state. At the same point of time, the weather has to change. The weather gods start dancing, and the result of their dance is rain and the cool breeze. Anyway, it's not any supernatural experience, or I'm trying to attract you through this change in weather, but at least I feel pleasure in seeing the weather changing itself, seeing the weather gods dancing. Why not? Whether they are dancing or not, at least we can perceive that they are dancing. If you get joy in perceiving something, why don't we perceive that? In fact, we perceive everything which gives us pain. Human mind problem is, it will perceive everything which it gives pain, but it won't perceive everything which gives joy. Whether seen or not seen, just perceive. God is here. God is playing with me. God is dancing. God is coming down as rain. It wants me to drench in its bliss. I am just perceiving that. And there's a bliss. There's a fountain of bliss in my heart. Do that. Every day, every moment, keep doing this. And in reality, it will convert. It will convert everything into reality. You will really see God's dancing in various forms. God can dance in any form. It can dance in the form of a human being. It can dance in the form of a peacock or a monkey. But it will give you pleasure. It will give you bliss, seeing the monkey dancing. Because you are perceiving the God in that monkey which was scaring you, now it will start giving you bliss. Just change in perception and change in pain, from pain to bliss. When you change your perception, your pain changes to bliss. This is life. This is how life has to be lived. You want to... His photo from the past 2 days from the back. And I said, there is some lesson. I'm looking at him. Some lesson is going to strike me. And today when Guruji said, from one to many and many to one, I was seeing Swamiji's beard, and only 2 lines we can see in the end. 2 long straight. So much of hair of his beard has become into 2. That is 1 line. But if we see only that line, we can't see the many aspects. That so much hair is there. We only see one as a long thing it is. Strand.
And I said, it's so simple. We just have to look at things and we can perceive what is behind the scene also. And that is enlightenment, actually. There's a beautiful anthem, everybody can sing along with her. I am neither the body nor the senses. I am not the mind nor the wisdom. Pure consciousness I am. I am the formless Chidananda Rupo Shivoham Shivoham Chidananda Rupo Shivoham Shivoham. I am not in bondage nor seeking liberation. I am not in tension nor in the stress. Pure consciousness I am. I am the formless Chidananda Rupo Shivoham Shivoham Chidananda Rupo Shivoham Shivoham. I am the creator, I am the creation. My creation is for my recreation. Pure consciousness I am the formless Chidananda Rupo Shivoham Shivoham Chidananda Rupo Shivoham Shivoham Chidananda Rupo Shivoham Shivoham. Thank you very much for being here. I wish everyone an enlightened life in this birth itself, so that you can enjoy the bliss of enlightenment. Thank you very much. Thank you, Guruji, for revealing of universe. By just knowing your dynamic nature, everything becomes known to us. Thank you, Guruji. Thank you everyone for coming. For remaining in touch with Guruji's subject, you can follow Guruji on YouTube by subscribing to Purna Ananda channel and receive Guruji's wisdom letters by registering your ID on www.purnaananda.org. We also have some books which can be purchased of Guruji. So after the session, you can just come here and purchase the book. And we will not be proceeding towards Ganga Ghat for evening bhajan kirtan session. Thank you. कुछ कह रहे हो तो आपको भी उसी वक्त instantly ही you will feel bad, or if you're doing something good you'll instantly only feel good. So when you said there's only one consciousness, so I think somewhere that's almost similar thing of saying whether they're using the word crystalline DNA, but that also means that one consciousness will perceive the other one also there and then. Yeah. Is there such a thing you feel that the not only the consciousness is shifting, but even the so-called DNA shift is along with that happening? Such a thing will happen, or a shift will happen. Such Such a thing called a crystalline DNA is coming in. Like children are being born, or we are, or our own DNA is getting. They don't specify when is it coming in, but it's coming in. When you hear this. But I just thought that basically maybe that's one way of explaining oneness of things. Yeah. But is there such a thing? Do you feel that our, we will sort of, sometimes you do experience something good happens, you feel happy for the other person right there, and then kuch gussa crystalline DNA. I just wanted to know your take on it, that's all. When you start perceiving everything as one single block of consciousness, then as I said, these peaks of pains and pleasures, they vanish, because there's no differentiation. There's no second entity other than you.
Everything is one single entity. So you don't see the other person's behavior as wrong or right. You just see it as a behavior. Life situations, you will see them as just an event. Some saints have said that there are no favorable or unfavorable situations in life. There are no good or bad circumstances in life. In life, everything is event. Everything are events. You perceive them as good or bad. You perceive them as favorable or unfavorable. Something favorable to you, you feel happy. Something unfavorable to you, you feel sad. But the same event, same situation, which is unfavorable to you, could be favorable to somebody else. A situation which is bad for you could be good for you. There's a pickpocket, you go to the market, your pocket is picked. It becomes an unfavorable situation for you. But for the pickpocketer, it becomes a favorable. I scold you. For you it will become unpleasant. But for me, very pleasant. So when you start seeing everything as that, then everything becomes events. Favorable, unfavorable, attribution is out. Good or bad, they are not attributed. They are just seen as events. Event is an event. Good or bad is your individual perception. And individual perception creates all the problems in life. So drop your perception of good or bad, right or wrong. See everything as event. Instantly, spontaneously, you will feel the bliss. It's the good and bad which is closing the gates of the bliss fountain. Just drop them. Nowadays, the art of living is one part of our life. Is not one part of life. I want to live the way how to live. Few words, please. Few words. I've been talking for hours and hours last 2 days. The art of living is. Art of living ही बता रहा हूँ ना मैं तो. Art of living करना है तो रविशंकर के पास जाना पड़ेगा. Oh, we can understand, but Don't learn out of living. Learn out of dying. Thank you, Guruji. If you know how to die, if you know art of dying, art of living is not required to be learned. It'll automate. That art will automatically come to you. Become a dead body. If dead body is kicked, did you ever kick a dead body? No. You kicked a dead body. And I touched. Touching, not touching, kicking. No. I have kicked. No. Many dead bodies I have kicked. Every time you kick a dead body, there will be a smile on the dead body's face. You know that? Recently died body, you just shake or hit on the chest like, oh, mummy, kyun mar gayi? Oh, papa, kyun mar gaya? In the Amitabh movies, they show, with both the hands, they'll hit on the chest. With every hit, the dead body will smile. I have seen dead bodies smiling like this because the muscles are not in the control of the mind now. Mind has gone out. So, whether you kick the dead body or you do anything with the dead body, it will smile. That's the art of living.
Anyway, few words since you wanted, which is painful to you. Don't try to do the same thing with the other person. Then you are getting caught in the vicious cycle of pains and pains and pains. So no tit for tat. Drop your ego. Always be humble. Bow down. Jhuk jaiye. Reduce expectations. Increase acceptance. Forgive and seek forgiveness. For everything, forgive people. And for everything wrong which you think you have committed, seek forgiveness. Make positive affirmations. Give and spread happiness. Offer gratitude for what all you have. Offer gratitude to your parents that they have given you this body. Offer gratitude to your spouse that she has taken care of you. Offer gratitude to your children that they gave you happiness. Offer gratitude to the God that He has given us such a beautiful world. If we want to offer gratitude, we can offer gratitude to everything, to the trees, to the flowers, to the monkey, to the donkey. Everybody has contributed in some way or the other way in our life. So start offering gratitude. When you start offering gratitude, you will always remain humble. There's a businessman, if you're a businessman, offer gratitude to your employees, to your workers, to your machinery, to your customers, to your buyers, to your bankers. Everyone you can offer gratitude because of them you are like this. Meditate regularly and realize your divine self. Become enlightened being. This is art of dying. You, having practiced, and in that state you die, you will merge with the Creator. You will become one with that divine being. So you become the Creator. पिछले साल पहली बार मैं ऋषिकेश आने से मैं धन्यवाद आपसे ज़्यादा मेरी पत्नी को देना चाहता हूँ, जिसकी वजह से मैं पिछली बार ऋषिकेश आया। और पिछले साल ऋषिकेश आने के बाद में आज तक 1 साल के भीतर जो मुझ में चेंज आया है, मैं बयान नहीं कर सकता, इतना चेंज आया। और मेरे को देखने वाले हर कोई इस बात के गवाह हैं। ये पूर्णानंदी भी सब लोग जानते हैं कि भाई ये कितना जो इसमें चेंज आया है, सब लोग मानते हैं उस चीज़ को। इस 1 साल के भीतर, इस 1 साल के पहले इनफैक्ट मेरा जो बिजनेस में भी मेरे को इतना बड़ा डाउन मेरे को आया, 1.5 साल की बात है। और उसके बाद में मैं यहाँ पे आया और एक क्षण भी मैं कभी विचलित नहीं हुआ। सब लोग देख के ये परेशान होते थे, अरे ये इतना बड़ा इसको धक्का लगा है और ये इसके चेहरे से मुस्कान क्यों नहीं जा रही है, इसको ये किसी से मतलब परेशानी में क्यों नहीं है। मैं हर पल कभी मेरी ज़िंदगी में, आज मैं 57 साल कंप्लीट हो गए, 58वां साल मुझे चल रहा है मेरे जीवन का। कभी परेशानी हो या अच्छी हो, 6 घंटे की नींद एकदम बढ़िया से मेरे को आई। कभी मैंने मतलब कभी जो काम है वो होना है, जिस टाइम पे होना है मैंने वो किया। अभी मेरे को ऐसा लगता है, जैसा मैं ये पूर्णानंद में भी देखता हूँ, मुझे ऐसा लगता है सबसे बड़ा फ़ायदा मुझे हुआ है। मेरे को कई बार ऐसा लगता है कि मुझे गर्व है, कई बार मेरे को ऐसा लगता है कहीं मैं ईगो में तो नहीं जी रहा हूँ। मैं फिर वापस इवालुएट अपने आप को करता हूँ, नहीं मैं ईगो में तो नहीं हूँ। फिर भी ऐसा लगता है मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है। मेरे साथ वाले भी बोलते हैं ये ईगो में तो नहीं है कहीं। अभी जैसे अभी 4 साल पहले मेरे लड़के की सगाई होने वाली थी, उस टाइम पे मेरे को एक लड़की देखने के लिए मेरे को बोले चलो भाई आपको भी देखना है, चलना है। बोले चलो। जाके आने के बाद मेरे को पूछे वो लोग कि भाई कैसी लगी। मैंने बताया अरे बहुत ही बढ़िया है, सब बिल्कुल कर सकते हैं। उन्होंने मेरे को घर में 3 मकेन निकाल के बताया ऐसे ऐसे, तुमको क्या मालूम, क्या देख सकते हो तुम, तो ये प्रॉब्लम है, इसमें ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। ठीक है भाई, हो गई होगी, मेरे से गलती हुई। फिर एक बार उन्होंने मेरे को लेके गए, बोले भाई चलो भाई अभी फिर और एक लड़की को देखने जाना है। मैं बोला देखो भाई 1 मिनट रुक जाओ, मेरी आंखें हैं खराब, मेरे को हर बच्चा अच्छा लगता है, आप लोग देख के आ जाओ, आपको अगर समझो समझ में आ जाए, बहुत अच्छा लगे, मेरे को हाँ की गर्दन हिलाने के लिए मेरे को लेके चले जाना। वेरी नाइस। तो मेरे को ऐसा लगता है, मैं आपसे मतलब ये क्वेश्चन मेरे को थोड़ा सा, मैं स्टेज फियर है समझो, जैसे कई बार बोलते जाता हूँ क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, कई बार मैं चूक जाता हूँ, कई बार माइक जरा थोड़ा लंबा पकड़ लेता हूँ। स्टेज फियर है। तुम्हारी आवाज सुन करके दूसरों को फियर आ रहा है। वो मेरे को
मेरे को इंटरनली तो मेरे को फील होता है कि व्हाट एग्जैक्टली आई एम। तो मेरे को ऐसा लगता है कि भाई मैं कहीं ईगो में तो नहीं जी रहा हूँ। ईगो में ही जी रहे हो, जी। परंतु ये डिवाइन ईगो है। जी जी ये एक्सेप्टेबल है, जी जी जी। ये होना चाहिए। एक और चीज़ होती है, जैसे मैं मेरे साथ वाले मेरे जो रिलेटिव्स हैं, मेरे ओन वो हैं, उनको जब तकलीफ में देखता हूँ और उनको मैं बताता हूँ नहीं भाई ये आपको ऐसा सोचना चाहिए, आप लोग ऐसा सोचना है, चाहे मेरी बहन हो चाहे मेरा भाई हो, वो लोग उसको नहीं आत्मसात कर पाते हैं तो बहुत तकलीफ होती है कि अरे मैं क्या नहीं कर रहा हूँ। उसका समाधान वो तो खैर आपने जैसे बताया, उनका जब टाइम आएगा वो लोग को जब समझेंगे जब ही समझ पाएंगे। मेरे बस में नहीं है, जब आपके बस में नहीं है तो मेरे बस में तो हो ही नहीं सकता है। लेकिन मेरे बस में क्यों नहीं है? मेरे को ऐसा लगता है, सॉरी। तो लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद आपका, इतना प्यार मुझे हर एक पूर्णानंदी ने दिया। और एक ईगो की बात है मेरे अपने आप को बहुत बड़ा ईगो ये है, मैं जिस भी ग्रुप से जुड़ता हूँ वहाँ मेरी पोजीशन ऐसी होती है। मैंने हमारी एक बिल्डिंग में जहाँ रहता हूँ उसमें 42 फ्लैट है, तो 42 फ्लैट में एक छोटे से छोटा बच्चा और बड़े से बड़ा बूढ़ा मुझको उतना ही प्यार करता है जितना हर पूर्णानंदी मुझे करता है। मैं एक BNI करके संस्था में ज्वाइन हूँ, वहाँ पे एक 50 हमारे बिजनेसमैन की एक संस्था है, उसमें वहाँ 58 इयर्स का मैं सबसे बड़ा हूँ और सब नेक्स्ट 48 है, और उसके पहले 25 से 35 साल वाले 20 लोग हैं। लेकिन तुम लगते तो उतने ही हो, 25-28 के लगते हो। मैं उन सबसे अपने आप को छोटा बना के चलता हूँ। उनके डांस भी ऐसे ही करते हो 12 साल के लड़के के जैसे, टांग कहीं, हाथ कहीं, बस ऐसी है, मुंडी कहीं, बहुत अच्छा लगता है। मैंने कहीं पढ़ा था कि वे है जिंदगी, तू मुझसे मेरा बचपन तो छीन सकती है लेकिन मेरा बचपना नहीं छीन सकती। वेरी नाइस, मुझे बहुत अच्छा लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद। वेरी नाइस, गुड वन। तो मैं बस एक फाइनल आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, मैं जो ईगो में हूँ वो ईगो में रह सकता हूँ ना? हंसी खुशी का वाली ईगो नहीं है, क्योंकि वो भी हंसी खुशी में अपना ईगो में रखता है, तो उसमें कोई ईगो नहीं है। हम किसी की इंसल्ट करते हैं, बी लिटिल करते हैं, किसी को डाउन ट्रॉडन देखते हैं, किसी को लो लेवल पे देखते हैं, तो ईगो कहा जाता है। आप खुश हो, आप खुशियाँ बांट रहे हो, उसमें कोई ईगो नहीं है। खुशियाँ बांटने में मुझे जितनी खुशी होती है, मेरे को उस बात की भी ईगो है। मेरे को मतलब यहाँ पे जैसे खाने में ऐसा लग रहा था कि किसी को तकलीफ हो रही है, मैं सबसे पहले जाके अब वहाँ पे बांटना शुरू करता हूँ और सब लोग मेरे को बोलते हैं तुम खा लो तुम खा लो। तो आज मैंने क्या किया, सबसे पहले जाके मैं खा लिया, मतलब इनको तकलीफ नहीं होगी। अब किसी ने मैं खा लिया सर, मैं खा लिया, अभी मैं आपको दे रहा हूँ। तो बहुत ज़्यादा मतलब पता नहीं वो क्यों, भगवान की देन है वो, मेरी तो कुछ उतनी औकात नहीं है, लेकिन बड़ा अच्छा लगता है सर। Next. How do you overcome fear? Fear of, everything else we can try, but when it comes to our loved ones, why do we fear for them? Same question yesterday, the sweet lady, sweetie, Yeah. sitting before you asked, so you can give the mic to her, she'll reply. How do you overcome it? She just raised her hand when you asked this question. And I think you asked a very relevant question, and probably it is there in everyone's mind. Everyone goes through some fear or the other in their life. Sweetie ji, boliye. Part of this group, and I'm going back very satisfied, Guruji. That's all. And I'm sure my fears I'm going to overcome with the help of your guidance in future as well. Now, what is the reply or solution you'd like to give to her, which you got? That I'll explain her in person. I think No, you should talk on the mic. Okay. One thing Guruji mentioned yesterday, that what are we fearing for? Our fears are that for our possessions, worldly possessions, which you realize that they are not yours. So at any time, if they are not yours, you're going to leave them. So whatever you possess, you are going to finally leave them one day. And if they are really yours, then they are not material possessions. You get it?
Our fears are always for loss of something, isn't it? Yes. Loss of not some material object. Anything, Loss of a person. whatever. Person is a material object only. Is the a person you talk of the body or his conscious or his soul or his atma? What? What he loses is the body. Even that person is not going to remain eternally with you, whoever it is. Even you yourself is not going to remain. So how could the others would remain eternally with you? Everyone is going to leave you, including yourself. You will leave this world. When you have the right to leave this world, doesn't others have the right to leave the world? Why fear? Everyone has their own time limit, timetable, lifespan. They will live that life. After that, whatever you do to contain, you will not be able to contain that. That life will go. Because that life has come here to make a journey. It is making a journey. Our life is something like a train. Let's understand life as a train. There's a train which is moving and stopping at different stations. It comes to Chennai, you board the train. This train has come from some other destination. You board the train, you sit in a compartment on a seat. There are already 4 people there. You have joined them. The train moves, you get acquainted with those people, you laugh, you talk, you eat, you share some of your joy, sorrow with them, and you get attached. At some another station, one of the traveler from that compartment will get down. Another will come in. The train will move. After some stations, someone else will get down. Someone else will board the train. At some station, you will get down. That person who got down at some station has boarded another train. That person has joined 3-4 other people in that train's another compartment and is going in a different direction. There that person is mingling with those people, talking to them, laughing with them, sharing their joys and sorrow. That person who got down from your train and boarded another train has already forgotten you, and he or she is continuing his or her journey. You will also do the same thing. You will get down at Delhi, you will board another train going to Rishikesh, Dehradun. This is the life. In family, people are boarding, some are getting down. Those who have got down have boarded another train. They have got other companions better than this companion. They are quite happy. Understood? This is the reality of life. Everyone, somebody or the other, you don't know which passenger is going to get down where. You don't know the destination of that person. That is not told to us. But it is certain that every passenger within our compartment, which we call as family, some passenger will get down somewhere, that passenger will board another train, another passenger will come in. That is why there are deaths taking place, but there are new births also taking place in the family. Family is not extinguished. In every family, deaths have taken place. In every family, newborn babies have come. So these are the new passengers. Some old passengers have got down. The train journey will continue. Question from that and another question too, 2 questions. The first one is what Radhika was saying. I talk to a lot of my friends. They don't necessarily talk about losing a family member. It is more that you feel for people you love, you sometimes feel more than you should be doing. Their ups and downs seem to affect you too much. It's not your own sometimes, but because you love them and you're such a part of their lives, it could be children, it could be a spouse, it could be a sibling, it could be a friend. We know that you give us so much of wisdom saying that life is
just a series of events and one should just take it as it comes, but It's difficult. sometimes it becomes so difficult. It's your mind says it's difficult. Your mind may say it's difficult, and if your mind says it's difficult, believe me, it is going to be difficult for you. And there are people here sitting here, and if some mind says, Mahesh kya bol raha hai? Easy. Same thing means difficult or easy? Easy. So there's another mind which says easy. I have also achieved that state where I just see events as events. So it is possible to evolve your mind from that difficult condition to easy condition or to an unconditional state. And the main input to decondition or uncondition your mind is pure knowledge. Always be in the company of saints, listen to satsangs, which you keep doing. So when this input goes into the mind, slowly it will loosen its attachments. Actually, what you're talking about love is not love. It is attachment. Attachment is the cause for all sorrows, not love. Love is never the cause for sorrow. Because in love, you have no expectations. You are only a giver. Here the fear is, I am giving, the other person is not responding. So there's an attachment. There's an expectations. Love is keep giving, whether it is your child, daughter-in-law, daughter, son, parents, in-laws, whoever it is, just give and forget. You have done your duty. Then there's no attachment. So don't confuse between attachment and love. Love every soul, every being. Perform your duties to the extent the family is concerned, your children are concerned. Yet, if they don't obey you, they don't walk on the right path of their lives, in spite of your, I'm going to some other extreme, it may not be the case here. Generally, I am saying. And you have tried everything, yet things are not in control, just forget it. Their time will come again, they'll get matured back and come on the right path. Love every soul and forget everyone else, because every being, as I said in this train, has a separate entity. It's a passenger. For some time, they are destined to travel with you. And every soul has come with its own destiny, individual destiny. Your destiny is with you. Your son's destiny is with your son. Your daughter-in-law's destiny is with your daughter-in-law. And your grandchild's destiny is with the grandchild. You have no control over their destiny. So allow them to lead their life as per their destiny. Having become relatives in this life, see, when you're traveling in a train, what will you do? You're just trying to give something because you know, okay, I have to spend maybe 24 hours with these passengers. You will not create any enmity. Even if the other passenger's behavior is not good, what will you do? You will withdraw yourself. Keep quiet. Only if the passenger wants, you will talk. You will offer something. If the passenger doesn't want to take that which you offer, you will take it back. You will not force. You will not do anything to antagonize other passengers, right? Because we know we have to travel for 24 hours. And if you antagonize any passenger, you can't see eye to eye, yet you are forced to complete the journey within that compartment with those 4 or 5 people. And you don't want those painful moments when you have antagonized somebody and you can't face them. But the same thing we don't do in family. We keep antagonizing family members. Others keep antagonizing us. We keep creating expectations. They expect from us, and then we all get caught into this web of expectations, and everyone suffers. So if you drop these expectations, just love, be a giver, don't be a taker. Your life journey will be much smoother, and you will not have any fear whatsoever for the being.
I think you have misunderstood my question slightly. I don't have any expectations. No, and not I you. was, I mean, generally I'm replying for. yeah. I was just generally talking about why do we feel so much for people we are close to. That's about it. Your attachment. Oh, That's all. yeah. Not love. It is the attachment. attachment. But don't you think they'll feel it's being callous if you don't give them that time and, like talk them through their whatever thing. It doesn't have to be even a family member. It could be just a good friend. Anyone. Yeah. It's up to them. How does one balance out that you tell them you care, but you don't, your mind, you don't want to get embroiled in their problems? You have no control over their perception. You might be a very, very caring person, very warm person. You sacrifice, you compromise for them. Yet, there could be people who may not acknowledge that. Your concern is that how to make them acknowledge that I care. Without yet getting involved. Yeah, but somewhere, if there is no expectation for anything, yet there is an expectation that the other person at least has to acknowledge that I care for them. Even that you cannot impose on others. It is their free will. They would have expected something else. What you thought care probably is not care from their perception. Probably they will think that it is her duty to do this. Caring is different. Loving is different. She is only fulfilling her duty. So their expectations, their perception could be completely different, where you have no control. Yet, if you are a person who's offering unconditional love, you keep doing whatever maximum you can do for the other person, forget their acknowledgement, forget anything else in return, and just be at peace. Whether they are happy, they are not happy, be at peace. If they are not happy, just sit in meditation, seek forgiveness. I don't know what wrong I committed, yet unknowingly I would have committed some wrong. That is why you are unhappy. Please forgive me. Seek forgiveness and forget it. We love them, we are concerned about their well-being all the time, with their home, with what they're doing and things like that. So suddenly to say, let me go, let's leave this whole thing, and if you don't hear from them, of course there's this anxiety, they didn't call you, where are they? And that's what builds a panic and fear, because you love them and you want to know if they're safe and things like that. And if you can call and check with them. No, I mean, you know how kids are, they're busy with their work, maybe they don't call you 2 days and you call all their friends where is to the say, respect? Where is the respect for your love? So it is expectation as a parent, and it's wrong. I don't know, by saying detaching myself from those feelings and saying, okay, when he calls, and then there's a kind of a you let go of your children and they live their lives and you live their lives and the attachment goes. So I feel it's better if you're in talking to your kids and having them around you to say, where they are. That's a fear, like she was saying. We fear when we don't hear from them in 2 days or 3 days. That could be most ideal situation, but everybody may not be lucky to have ideal situation in their lives. And the other person has already got detached from you. Yeah, you are mentally attached. Yes, we That's are. your problem. It's not the other person's problem. Yeah, but then we See, don't find out want the problem. Find out where the problem lies. And then find solution for that problem where it lies. If the problem lies in me, I should not blame the other person. Other person is free. Other person is detached from me, not so much attached to me, but I am attached to the other person. So the problem lies here. Find solution here. It's kind of true that we are attached to them, but by letting go completely and saying, okay, you live your life and I live my life and we just meet at some point. I think the more you're in touch with people, the more bonds you found with them. And I know Western societies where they don't know their kids, where they are, what they're doing.
and they're surprised that we are so close to our kids and we know everything about them. And I think that builds a bit of a family bonds between us that we try to keep compared to Western societies. Yeah, I know this Become problem. that way and say, I'm not attached, then we could become like them. We don't know where our kids are, what they're doing. It's their problem, they're grown. That's not us. I mean, that's not me at least. You have to evolve yourself. You have to evolve yourself. You have to accept the reality. You have to see them the way they are. And then if you have created excessive expectations which they are not able to fulfill, the only solution is reduce that excessiveness in your expectations. That's all, nothing else. And the day you start reducing your excessive attachments and expectations, you will start feeling the happiness, inner happiness. You will, now, if you are not able to do that, you have to find some ways and means. Maybe you need to divert your mind to something else. If your mind is free, with lot of spare time available, then it will only create these expectations. Become busy. Let there be no time for expectations. Maybe a little small solution for you or for anybody else. Yes. Yeah. Let there be no time for expectations. Today morning in the skit, the husband goes to the office, wife is in the house doing some petty things. She has a lot of time. She is waiting for the husband, waiting for the call, and that guy doesn't know whether my wife exists or not. But she has all the time to know that my husband exists. Husband has no time to know that whether my wife exists or not. So this is the problem of excessive attachments, expectations. See from the other person's point of view, they are so busy, they have no time. Okay, let me also become busy in something creative, passion, something, so that your mind is occupied. You're right about that, but Start meditating, start listening to good subjects, knowledge, satsang. But the crux of this problem is ourselves. We are the problem. We are the problem. I always believe one thing very, with strong conviction, I believe that if I am suffering, if there's a pain, if my mind is depressed or disappointed, I know very clearly I am the problem. I never look at anybody else as the problem for my depression, disappointment, or for my sorrow. I never ever do that. I know I am the problem. When you know you are the problem, you will find solution within you. You cannot change others. You have the right to change yourself. That is possible. If you start changing yourself, the whole world is changed. I visited US a couple of years ago. There were many programs. I remember one talk in Chicago. There were 200-300 people, and I was cautioned before the talk that this is not India, this is US. The time was 4 p.m. to 6 p.m. Please start at dot 4 p.m. Please end on dot at 6 p.m. It was Sunday evening because Monday everyone has to go to their offices early morning. Please be careful of this timing. I said, okay. I started my talk in the usual course. I just forgot. And what I thought I would complete in 2 hours, I couldn't even complete 25% of it. But the subject was so interesting that suddenly when I looked at my watch, it was 6 o'clock, and I couldn't complete even 25% of my talk. And these were the subjects we were talking about: behavior, expectations, suffering, and all such things, blessings, curses, negative vibrations, positive vibrations. Suddenly when I looked at my watch, it was 6 o'clock, so I said, I think I should stop my talk, and this is the time I was given, so maybe some other opportunity I can complete my talk.
There were 300 people sitting in that hall. Stunning silence because everybody got engrossed in my talk. They themselves forgot that it was 6 o'clock. For 2 minutes there was pin drop silence. Then someone got up from the audience. He said, "Sir, we know you have been talking for 2 hours and it's a very interesting talk. At least I would like to listen to you more and more if you can continue right now. And if you don't mind, I'll make an announcement that whoever wants to go, they can go. Whoever wants to continue to listen, they can continue to sit in the hall." I said, "Okay, I have no problem because I have nothing else to do. I have no shopping, no sightseeing. I'm here to talk. I'll keep talking." So he made an announcement that anybody wants to leave, they can leave. The speaker is going to talk, continue his talk. I sat down, waited for people to leave. Not one soul got up. I thought people did not understand what he said. I said, "You please repeat." He once again repeated. We waited for another 5 minutes. Nobody stood up, nobody went out. So then we said, "Okay, everybody seems to be interested." I started my talk. From 6 o'clock, it was already 2 hours. I asked at 7 o'clock, should I stop? They said no. 7:30, I asked, they said no. 8 o'clock, finally 8:45, I said, "I think I'll stop." From 4 onwards, and these were the topics, 8:45 we said, "I think we'll stop. I think it's more than this you can't digest. Maybe some other opportunity." 50% of people, straight away they came on the stage. Before I started, nobody stood up also. Nobody greeted. US, some ego. We are Americans, NRIs, all Indians. There were some Americans. But after the talk, 50-60% people came on the stage. They hugged me, they touched me, they cried. Many people cried. And the invitation started flowing. "Sir, please come to our house. Please come to our group." For 6 months, I was trying to conduct some more programs. There were people not ready. On that day, everyone, "Tomorrow if you have some time, 1 hour. Tomorrow if you have time, evening, morning." Next 4 days, morning, afternoon, evening, there were talks and talks, which I tried for 4-5 months, I couldn't. That day, talks took place. Some people invited, we went to their houses. I went to some houses where 5 acres of land, mansion, big, huge bungalow, building, 15 bedrooms, 4 drawing rooms, bar counters, 3 kitchens, 2 souls living in that house. And when we sat on tea, we were talking, both husband and wife started crying. He said, "We have everything, but no peace. My son stays 2 kilometers away from here, and my grandchild has taken birth 6 months ago. If I want to meet my grandchild, I have to talk to my son, my daughter-in-law, take an appointment. They will give me a fixed time slot. Dad, come on this day at so-and-so time and leave at this time." And they were crying. This is the life they have been living or accustomed to. I said, when he doesn't care, he doesn't have the love and affection. One-sided love and affection will never work. Love and affection has to be both-sided. You can love, you can become an unconditional lover. You become an unconditional lover, just offer your love, offer whatever you want to offer, and forget that your son will call, your daughter-in-law will call, they will ask you to come and meet your grandchild. Whenever they ask you, you can go, forget otherwise. Live your life. Find out how to spend your time peacefully. They started doing that, and I keep getting their pictures on Facebook. Now they are enjoying their life. They were stuck up somewhere. Why my son is like this? I have done so much to my son. I brought him up. I spent millions of dollars on his education. I did this, I did that. So much expectations. By doing all that, he created a lot of expectation that he will do similar things to me.
offer his love, he will offer his gratitude to me. Whenever I want to go to his house, I'll be allowed to come to his house and all that. And when that doesn't happen, he's suffering. Anyway, some solutions we could give, and they are happy beings now. I'm happy. This is the problem. Many times it is one-sided. When there's no response from the other side, divert your mind to something else. Come to us. We are there. We can offer you all the love in this universe. All that love which you have not got anywhere else, we can offer you. Dolly, you want to say something? She is from... To overcome them very nicely, and I am attached with him since then online. Right now it was such a divine coincidence that I was visiting Dehradun and I came to know that this retreat is taking place in Rishikesh. My niece got married only yesterday, and I took time out to come here and visit him today, and I don't regret at all that all our relatives are at home and I'm here, and I'm enjoying every moment of it. You said that we should not be having any expectations, but I would like to have this expectation that you will visit us sometime soon again. So please do come. Thank you. गुरुजी, कहीं ना कहीं शायद बचपन से कुछ रहा है अंदर की इनजस्टिस अच्छा नहीं लगता है मन को. कोई इनजस्टिस हो रहा है, चाहे टीवी सीरियल में हो, घर में हो, बाहर हो, छोटा सा भी अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, इनजस्टिस है, तो वो मन को अच्छा नहीं लगता. लगता है कि वो जल्दी से जल्दी क्लियर हो जाए, सब नॉर्मल हो जाए तो अच्छा है. पर साल भर से जैसे आपसे जुड़ी हूँ तो वो धीरे धीरे फेड आउट हो रहा है, पर वो अभी भी वो बीज कहीं ना कहीं है कि सब चीज़ ठीक होना चाहिए, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है तो क्लियर हो जाना चाहिए, सब बैक टू नॉर्मल हो जाना चाहिए. फैमिली में या दुनिया में? दुनिया में भी, फैमिली में भी. ईरान में, यूएस में, बगदाद में? नहीं, वो सबसे कंसर्न नहीं है गुरुजी. ज़्यादातर फैमिली, ज़्यादातर तो होना ही चाहिए, वो इंटेंशन तो होना ही चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं है. और जहाँ इनजस्टिस की बात का तो मैं कुछ कह नहीं सकता. कई बार ऐसे लगता है इनजस्टिस, बट जो इनजस्टिस कर रहा है उसके पॉइंट ऑफ व्यू में, उसके कॉन्टेक्स्ट में तो जस्टिस ही है. जैसे कई बार हमारे सर्वेंट्स के साथ भी होता है, हस्बैंड वाइफ के बीच में भी कुछ हो जाता है, कहीं भी जैसे आसपास जिनसे हम कनेक्टेड हैं, तो वो मन को अच्छा नहीं लगता है. ऐसे लगता है कि क्यों ऐसे हो रहा है, ठीक हो जाना चाहिए. थोड़ा बहुत कोशिश अपनी तरफ से भी हम करते हैं. डेफिनेटली होना ही चाहिए. इतना कंसर्न तो वी कांट, इफ यू आर एनलाइटेंड और यू आर वॉकिंग ऑन द स्पिरिचुअल पाथ, डजंट मीन यू विल बिकम बफेलो. हमारे स्वामी जी कहते थे, मैं स्वामी जी को पूछता था कि स्वामी जी, आफ्टर एनलाइटनमेंट आई थिंक नथिंग विल मैटर. बोले, नो, यू विल नॉट बिकम बफेलो. यू विल हैव ए प्योर हार्ट, जैन. समटाइम्स इट विल क्राई फॉर अदर्स. इट डजंट मीन दैट यू आर नॉट एनलाइटेंड. दूसरों का दुख देख करके आंसू आते हैं या थोड़ा बुरा लगता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट उसमें एंग्रॉस नहीं होना चाहिए. एंग्रॉस नहीं होना चाहिए. और केवल वो सोच सोच करके अपने आप को डिप्रेस नहीं. दुख मतलब एक सोल के प्रति है, एक जीवात्मा के लिए, कि ये जीवात्मा दुख पा रही है, ये क्यों दुख पा रही है, ये थोड़ा सा समझ जाए, थोड़ा मैच्योर्ड हो जाए. हमारे विकी प्रीति के जैसे यहाँ नाटक करे और उन्होंने जैसे बताया एक्सपेक्टेशन छोड़ करके या ऐसे कुछ हो जाए तो मज़ा आ जाए, ये एक इच्छा है. दिस इज ए प्योर इंटेंशन. सो ये होना ही चाहिए. ये इतना ही है, एंग्रॉस नहीं होते हैं. पहले थोड़ा हो भी जाते थे, पर अभी निकलना आता है. अब कोई इशू नहीं है जी. अब तो आप वो बंदर के जैसे हो गए ना. एनलाइटेंड सोल को एक बंदर के साथ में कंपेयर किया जाता है. वो एक, क्यों बंदर कहाँ है वो, एक डाली को पकड़ा रखता है, वो बंदर झूलता रहता है, चने खाता रहता है, दूसरे को मारता भी है, मुंह बनाता है. ये एनलाइटेंड बंदर है. जो एनलाइटेंड होते हैं वो ब्रह्म की डाली को पकड़ लेते हैं. ब्रह्म पकड़ा हुआ है और संसार में चने मारना, उसको चने मारना, उसके चने छीन लेना,
उससे मुंह बनाना, उसको छेड़ना, इसको छेड़ना, हम भी छेड़ते रहते हैं, आपसे बात कर रहे थे, इसको छेड़ रहे थे, उसको छेड़ रहे थे, इसको छेड़ रहे थे, लेकिन ब्रह्म की डाली पकड़ी हुई है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो थोड़ा ऐसे दुख हो, कोई इशू नहीं है, बट हरदम वो ब्रह्म भाव भी रहे, थोड़ा किसी के लिए कंसर्न, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ कर सकते हो तो कीजिए। जैसे मेरे पास में मैंने पहले भी शेयर किया था, एक लेडी आई थी, राशि की फ्रेंड थी, वो जो जापान में सुनामी, लता क्या डिप्रेस हो गई थी, वो एक बार आई थी सेशन में, तो वो आकर के वो 2 महीने पहले, जो 2 महीने पहले मतलब जापान में जब सुनामी आया था, उसके 2 महीने तक वो डिप्रेशन में चली गई, क्योंकि सुनामी आया तो 24 घंटे टीवी में वो लाशें दिख रही है, टूटे हुए मकान दिखाई दे रहे हैं, उनको तो अपनी टीआरपी बढ़ानी है, यहाँ हमारी टीआरपी बढ़ रही है डिप्रेशन की टीआरपी। बेचारी डिप्रेशन में वो आई थी, जब ऐसी डिप्रेशन में मैं क्या करूं, मुझे इतना बुरा लग रहा है, ये लग रहा है, वो लग रहा है, मैं रोती जाती हूँ, मैं देख नहीं पाती हूँ, सपने में भी वही आ रहे हैं, डेड बॉडीज। मैंने कहा कहीं भी कुछ हो रहा है, आपका कंसर्न होना अच्छी बात है, अनकंसर्न रहना अच्छा नहीं है। आप कंसर्न हो कि वहां सुनामी आया, बहुत हानि हुई जान माल की, आप ये देखो कि आप क्या कर सकते हो, खाली रोने से कुछ नहीं होगा, आप ये देखो कि क्या कर सकते हो। मैंने कहा कि आप बहुत कुछ कर सकते हो, उन्होंने कहा कि क्या कर सकते हैं, मैंने कहा फाइनेंशियल एड भेजिए, बोले नहीं इतने पैसे तो नहीं है मेरे पास, ठीक है, ब्लैंकेट्स, कपड़े, मेडिसिन्स वो भेजिए, वो भी कोई मैं नहीं कर सकती ज़्यादा, वो भी नहीं कर सकते आप। तब आप जो संस्थाएं करती है उनके साथ में जुड़ जाइए, लोगों से लेकर के कुछ कंट्रीब्यूट कर दीजिए। बोले हाँ कर तो सकती हूँ, मैंने सोचा नहीं इसके बारे में। मैंने कहा चलो और कुछ नहीं कर सकते हैं, फिर भी आप एक काम कर सकते हो, घर में बैठ करके उन सारे सोल्स के लिए प्रेयर कर सकते हो। एंड बिलीव मी, नॉट वन सिंगल प्रेयर विल गो वेस्ट इफ डन विद गुड इंटेंशन। अगर हम लाखों लोग उन सोल्स के लिए प्रेयर करेंगे तो उन सोल्स को कहीं ना कहीं सदगति मिलेगी, कहीं ना कहीं कुछ अच्छा होगा उनके लिए। वो तो आप कर ही सकते हो, और वो तो एबंडेंटली हमारे पास अवेलेबल है, प्रेयर्स है, ब्लेसिंग्स है, ये तो एबंडेंटली अवेलेबल है, ये तो कर ही सकते हो। तो ऐसे हम कई बार किसी के लिए कुछ कर सकते हैं तो कीजिए, कुछ नहीं कर सकते हैं प्रेयर्स कीजिए और उससे हट जाइए। जी गुरुजी, उसके लिए कहा था, वो ईगो है आपका। मतलब आप पेड़ को पेड़ देख रहे हो, पेड़ को तुच्छ योनि देख रहे हो, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। मैं एक जीवात्मा, यहाँ जो कोई सफरिंग हो रही है किसी की, जो लाइव जीवात्मा है, जिसको ऑलरेडी कई प्रकार की योनियां मिल रही है और वो सफर कर रहा है, उसकी प्रेयर की बात कर रहा हूं। वो सफर नहीं कर रहा है, पेड़ सफर नहीं कर रहा है। इनफैक्ट आपको बताऊं सीक्रेट, बिल्कुल यही तो जानने हैं, पेड़ आपके लिए प्रे करता है, हे भगवान इसे अगले जन्म में पेड़ की योनि दे दे। क्योंकि लोग सब पेड़ के नीचे जाके रोते हैं, घर से भाग करके पेड़ के नीचे बैठ करके ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो, तो पेड़ को बड़ा दुख होता है, क्योंकि वो कभी नहीं रोता, वो सदा प्रसन्न मुद्रा में है, उसके ऊपर फल लगे हैं, छाए है, शेड है, धूप में लोग आके वहां बैठते हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो जो अच्छा लगता है वो पेड़ को भी ट्रांसफर होता है, पेड़ खुश होता है कि मैंने किसी को तो सुख दिया। फिर पेड़ से कोई अंगूर तोड़ करके, आम तोड़ करके खाता है, पेड़ बड़ा प्रसन्न होता है, वाह मैं किसी के तो काम आया। और नीचे बैठा वाला रो रहा है, तो पेड़ भगवान से प्रार्थना करता है कि हे भगवान शकुन को अगले जीवन में पेड़ बना दे, बेचारी की प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगे। नया एंगल है। अच्छा गुरुजी, एक और बात, जैसे हम लोग कभी कभी कुछ अच्छा काम करना चाहते हैं, मगर अच्छे काम करने के लिए आपके जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं वो आपको बोलते नहीं ये ठीक नहीं है, और वो फोर्सफुली मना करते हैं, या तो मे बी दैट पर्सन इज़ नेगेटिव, मेरे फैमिली मेम्बर भी नेगेटिव हो सकते हैं, पॉसिबल है,
तो उस सिचुएशन में मतलब जो हम अच्छा कुछ करना चाहते हैं और नहीं करने देते, तो उस सिचुएशन में हम लोग को कैसे रिएक्ट करना चाहिए? थोड़ी डिप्लोमेसी और थोड़ा उनकी तरफ भी ध्यान, जितना आप जो अच्छा करने की एक्टिविटी में ध्यान देना चाह रहे हैं, टाइम देना चाह रहे हैं, उससे डबल या ट्रिपल टाइम आप उनको दीजिए। उनको ये नहीं लगना चाहिए कि मेरे टाइम को कट कर करके ये दूसरे को टाइम दे रही है, वो किसी को सहन नहीं होता है। आप उनको जितना टाइम वो डिजर्व करते हैं, जितना उनका राइटफुल टाइम है, जितना उनका राइटफुल सर्विस है, और इनफैक्ट अगर आपको जैसे स्पिरिचुअल एक्टिविटी में जाना हो, सत्संग में जाना हो और घर वालों को पसंद नहीं आता है, तब मैं उन लोगों को कहता हूं कि आप एक्स्ट्रा टाइम दीजिए, उनको एक्स्ट्रा सर्विस दीजिए। सत्संग में जाकर के आओ तो एक्स्ट्रा टाइम दीजिए उनको ये नहीं लगे कि मेरे टाइम से कट कर करके वहां जा रही है। मेरा टाइम तो मुझे मिल रहा है और सत्संग में जाती है उस दिन एक्स्ट्रा टाइम मिलता है मुझे। हमारे जो भी थर्सडे लोग आते हैं ना, कई लोग अकेले आते हैं, या तो हस्बैंड अकेला आता है, वाइफ अकेली आती है, कई ऐसे भी है, कई फैमिलीज आती है जो अकेले आते हैं, बोलते हैं कि क्या करें गुरुजी, वो मेरे स्पाउस को पसंद नहीं है, हस्बैंड को पसंद नहीं, वाइफ को पसंद नहीं। मैं कहता हूँ हर थर्सडे जब यहाँ आओ, हस्बैंड आता है तो उसको कहता हूँ थर्सडे सेशन के बाद में घर जाओ, यहाँ से फ़ोन करो कि डार्लिंग चलो आज बाहर चलते हैं खाने के लिए। हर थर्सडे को गिफ्ट ले जा करके दो, तब थोड़े दिन के बाद में वो खुद याद दिलाएगी, अजी सुनते हो आज थर्सडे शाम को जा रहे हो ना? क्योंकि उसको कुछ फायदा होने वाला है। तो वैसे ही वाइफ को भी करना चाहिए, हम लेडीज को भी बोलते हैं कुछ ना कुछ ऐसा करो कि उसको लगे कि यार सत्संग में अच्छी बातें हो रही है। अब दूसरे लोग क्या करते हैं, उल्टा काम करते हैं, सत्संग में जाके आते हैं, ज्ञानी हो गए, ज्ञानी हो गए तो घर वालों को लेफ्ट एंड राइट ज्ञान बांटते हैं, न हस्बैंड को कुछ सोचते हैं, न सास ससुर को कुछ समझते हैं, न बच्चों को कुछ समझते हैं, क्योंकि ज्ञानी तो एक ही है सत्संग में जाने वाला, बाकी तो सारे अज्ञानी है। तो ये लेफ्ट एंड राइट की जो नेचर बन जाती है ज्ञान देने की, देखिए जी आप ये कर्म कर रहे हैं, ये अच्छा नहीं है, हमको बताया गया इतने कर्म होते हैं, फिर वो क्षेत्र में जाना पड़ेगा, फिर आपको इस योनि में आना पड़ेगा। वो बोलेगा अम्मा मेरी तो सत्संग में मत जाया कर। सत्संग में जाके आकर के आप अगर उनके जैसे ही रहो, नॉर्मल, मैं घर में, आप मेरे घर में आएंगे, मैं मेरे घर में, मैं गुरु नहीं हूं, मैं गुरुत्व दिखाता भी नहीं हूं। मुझे कई लोग मेरे बच्चों को कहते हैं मेरी लड़कियां हैं, अपेक्षा है, उसको कई लोग कहते हैं कि अपेक्षा कितनी लकी है, तो 24 घंटे गुरुजी के साथ रहती है, ये तो ज्ञान, ये इतनी अच्छी अच्छी बातें। उसको पूछिए 26-27 साल की हो गई है। Not even once. नॉट इवन वंस। गुरुजी ज्ञान मैं भी नहीं बांटती हूँ। आपको नहीं पता? नहीं, बट मुझे शौक है जाने का। मेरे हस्बैंड बिल्कुल नहीं है सत्संग में, तो वो बोलते रहते सब गुरु फ्रॉड है, सब बेवकूफ बना रहे हैं तुझे। वो इसीलिए आपको, आपके हाव भाव जैसा वो चाहते हैं, सत्संग से आने के बाद में आप वैसे नहीं हो। मैं वही कह रहा हूं, यू आर नॉट ए नॉर्मल वाइफ विद योर हस्बैंड। आई कैन गारंटी, आई कैन चैलेंज। एक्टिंग चालू कर दें गुरुजी। हाँ, एक्टिंग चालू कर दें फिर। हाँ, I am an absolute normal husband for my wife. Guru Ma is an absolute normal wife with me. And we are absolute normal parents for our children. कभी भी ऐसा किसी को लगा ही नहीं, न मेरी वाइफ को लगता है कि मैं कोई गुरु हूँ, न मुझे कोई लगता है कि वो गुरु माँ है, न बच्चों को लगता है, न मेरे पेरेंट्स को लगता है। मेरे पेरेंट्स भी डांटते रहते हैं, मम्मी डांटती है कभी कभी, बच्चे भी डांटते हैं, बच्चों से छेड़खानी भी करते हैं, यहाँ की वहाँ की बिचिंग, लेग पुलिंग सब करते हैं, हम लोग एंजॉय करते हैं, नॉर्मल पेरेंट्स। और उनको भी पता है ये सब पापा मम्मी जो करते हैं सब एक्टिंग कर रहे हैं, लेकिन अच्छा लगता है उनको, जो अच्छा लगता है हम वो करते हैं। जस्ट बी ए नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, यही तो प्रॉब्लम है। नहीं, हम वैसे तो नॉर्मली रहते हैं, लेकिन वो कभी कभी क्या, जो मेरे एक बॉम्बे में जो मैंने बताया था आपको, गुरु हैं, फिर अब आपसे मिलने के बाद आपसे बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो गया है, तो ऐसा भी हो सकता है कि हम दो गुरु एक साथ में, मतलब कभी उनको भी मिले और आपको मिले, ऐसा हाँ, हो सकता है, कर सकते हैं ना? हाँ, कोई दिक्कत नहीं। और जैसे इस्कॉन मंदिर से भी आप उनको मत छोड़िए, मैं छुड़वा दूंगा।
यहाँ कई ऐसे बैठे हैं आपकी स्टेज से कई लोग, ये हमारी पुष्पा जी यहाँ बैठी है, केदारनाथ जी की धर्मपत्नी। अच्छा आप भी हो, वो केदारनाथ जी की धर्मपत्नी भी, कुछ बात कीजिए। आज उनसे पूछती मैं भी 3 साल पहले यहाँ पे फोर्सली आई थी, मेरे हस्बैंड मेरे को फोर्सली लाए थे। लेकिन जैसे जैसे यहाँ आने लगी तो मेरे को अपने आप में बहुत चेंज लगा, गुरुजी की कृपा हुई। एंड नाउ मेरा मतलब जो मैं थी 3 साल पहले, आई फील दैट आई एम नॉट दैट द सेम चीज। अभी बहुत चेंज आया है, बहुत आई एम मोस्ट हैप्पीएस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। आई कैन टेल यू। गुरुजी सेवा तो कर सकते हैं ना, अगर जैसे एस्कॉन मंदिर है उनके साथ भी हमारा अटैचमेंट है। कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आपको जो अच्छा लगे कीजिए ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेवा कीजिए, पैसा दीजिए, फिजिकल कीजिए, जिस प्रकार से भी आपको खुशी मिलती है वो कीजिए। मैं केवल इतना कहता हूँ, अपनी फैमिली में जस्ट बी ए नॉर्मल वाइफ, बी ए नॉर्मल मदर, बी ए नॉर्मल डॉटर इन लॉ, बी ए नॉर्मल सिस्टर। वो आपसे कभी ज्ञान मांगना चाहे ज्ञान दीजिए, वरना मत दीजिए। फिजिकली, मेंटली, इमोशनली ट्राई टू बी ए नॉर्मल लेडी। इनफैक्ट मोर देन ए नॉर्मल लेडी। मोर देन ए नॉर्मल लेडी मतलब अगर आप अकेली सत्संग आती है और आपके हस्बैंड नहीं आते हैं, तो आपको तो इतना बन ठन के उनके सामने रहना चाहिए कि परी आई है स्वर्ग से। ये आप सती सावित्री रह करके सफेद साड़ी पहन करके बैठी होगी, ऐसे ध्यान करती रहोगी, हस्बैंड बेचारा टीवी देख रहा है। नो, नॉट अलाउड, नॉट अलाउड। मैं गुरु माँ की क्वालिटी बताता हूँ। मैं अगर सुबह 8 बजे तक सो रहा हूँ, वो 8 बजे तक वहीं रहेगी, वो उठ के नहीं जाएगी, मेडिटेशन भी नहीं करेगी, कुछ भी नहीं करेगी। मैं 4 बजे उठ गया, वो भी 4 बजे उठ जाएगी। मैं जब खाना खाने बैठा, वो खाना खाने बैठती है। मैं अगर सो जाऊँगा, उसको कहीं जाना है बाहर, तो पूछेगी कि मैं बाहर जाकर आ जाऊँ क्या। हम दोनों एक दूसरे के साथ में ऐसे रहते हैं कि जैसे एकदम हस्बैंड वाइफ, नॉर्मल और एक्स्ट्रा नॉर्मल। इस प्रकार से एक्स्ट्रा नॉर्मल, वो एक्स्ट्रा नॉर्मल नहीं कि आप जगे हुए टीवी देख रहे हो और मैं ध्यान कर रही हूँ, वो नहीं। टीवी देख रहे हैं, टीवी देखिए, मूवी जाने की इच्छा है, मूवी जाइए। उनकी जो जो इच्छाएं वो पूर्ति कीजिए। गुरुजी, हस्बैंड जो है, जो भी रिलेशन हमारे जिससे भी होते हैं, दे आर ओनली कार्मिक रिलेशन की वजह से वो हमारे हस्बैंड है इस लाइफ में। बट हमको अपने लिए सेल्फ रियलाइजेशन के लिए हमको अपने लिए जीना है। तो इफ़ वी डोंट फाइंड टाइम, तो हम लोगों को रात को अपना जो पर्सनल टाइम होता है, वो तो रात को मैं उठ के कुछ भी कर सकती हूँ ना। 24 घंटे पर्सनल टाइम है। फिजिकल बॉडी ऑफर कर दी किसको? मैं तो कहता हूँ ये फिजिकल बॉडी मिली है दुनिया से, संसार से, इसको संसार में लगा करके रखो। आत्मा मिला है परमात्मा से, तो आत्मा को परमात्मा में लगा के रखो और इस शरीर को दुनिया में लगा के रखो। बस वही करना है। साल 24 घंटे आपके पास में है। मैं मेरे बच्चों को लेकर के जाता था मूवीज, जब मैं बहुत इंटेंस साधना करता था, ये एनलाइटेंड स्टेट के पहले। बच्चों की इच्छा होती थी मूवी जाने की, ले जाते थे। मूवी चालू हुई, लाइट स्विच ऑफ हुए, हमने आंख बंद कर लिया, हमारा मेडिटेशन करने लग गए। इंटरवल हुआ, लाइट खुली, आंख खोल करके, बहुत अच्छी थी मूवी, मजा आया। अब पॉपकॉर्न खाओगी, कोल्ड ड्रिंक लाऊं, ये लाऊं, वो लाऊं। बाहर जाते थे, वो सब लाते थे, खाना खाते थे। जैसे ही लाइट स्विच ऑफ हुआ, फिर मेरा मेडिटेशन। लाइट ऑन हुआ, पिक्चर खत्म हो गई, फिर आंख खोल दी। पूरे 2.5 घंटे 3 घंटे मैं मेडिटेशन करता था वहाँ पर थिएटर में। बच्चों को क्या चाहिए? पापा मुझे पिक्चर ले जाए, मैं ले जाता था। पापा इंटरवल में खिलाए, मैं खिलाता था। इनकी नीड सेटिस्फाई हो गई, मैंने मुझे जो करना था मैंने भी कर लिया। ऐसे हम रास्ते निकाल सकते हैं। दिखाइए मत किसी को कि आप स्पिरिचुअल हो, ये हम गलती करते हैं। दिखाइए मत कभी भी कि हम बहुत स्पिरिचुअल है, हम इवॉल्व है। छे कोई मूवी जाता है, छे बाहर खाना खाता है कोई। हम तो हर 2-4 दिन से बंडी पर कोई पानी पूरी खाते हुए दिखते हैं, कहीं पिज्जा खाते हुए दिखते हैं। हमको तो लोग बहुत बदनाम करते हैं, ये गुरुजी खाने पीने वाले ही गुरुजी है। गुरुजी, लास्ट फाइनल क्वेश्चन, एक ये बताइए, एनलाइटन जो आप बताते हैं, एनलाइटन की क्या पहचान है? कि मतलब वो एनलाइटन हो गया है, उसकी कोई परिभाषा है कोई? आप जब प्रेग्नेंट हुई थी आपको पता चल गया था कि पेट में बच्चा है? 1-2 महीने के बाद में पता चला ही होगा ना, या नहीं पता चलता है? एक आप मतलब कोई भी लेडी को प्रेग्नेंट होती है तो पता चलता है ना। तो एनलाइटनमेंट इज प्रेगनेंसी।
पता चल जाएगा। इट इज़ ओनली जस्ट टू नो योरसेल्फ, अपने आप पता चलता है। ऐसे नहीं कि जैसे मैं अगर आप में देखूं या किसी और में देखूं कि एनलाइटन हो गया, उसकी कोई ऐसा नहीं है कि बॉडीली या उसकी कुछ पहचान अभी होती क्या है, कोई मैं फिक्स पैरामीटर बता दूंगा ना, आप डिप्रेस हो जाओगे। तो कोई फिक्स पैरामीटर्स नहीं है। एनलाइटमेंट का पता चल जाएगा, आप चिंता मत कीजिए। और नहीं पता चलेगा तो हम ही है, सर्टिफिकेट रेडी है आपके नाम का, खाली कोरियर से भेजना है। थैंक यू गुरुजी। जब एनलाइटनमेंट चाहिए तो सबसे पहला नियम है तन मन धन तीनों गुरु के चरणों में समर्पित कर देते हैं, और उसके बाद में एनलाइटनमेंट की इच्छा भी समर्पित कर देते हैं। हमको हमारे पहले गुरु के पास जब तक थे, साधना करते थे, एनलाइटनमेंट या कुछ प्राप्ति करने की इच्छा थी। स्वामी जी के पास जाने के बाद में वो इच्छा भी समाप्त हो गई। और हमारे पूरे पूर्णानंदियों को आप पूछ लीजिए, जब आए थे कुछ ना कुछ इनकी इच्छाएं थी स्पिरिचुअली, कि हम स्पिरिचुअल आगे बढ़े, हम समझें, हम ज्ञान प्राप्त करें, ये करें। अब वो सारे लोग बोलते हैं गुरुजी अब एनलाइटनमेंट भी नहीं चाहिए, आप ही चाहिए, 24 घंटे बैठे रहिए यहीं पर। सब एनलाइटेंड हो गए। वो एनलाइटनमेंट की इच्छा भी छूट गई, और एनलाइटनमेंट की इच्छा छूटते ही एनलाइटन हो गए। प्रॉक्सिमिटी टू गुरु इज ज्ञाना, वो इच्छा भी जरूरत नहीं है, वो अपने आप दे करके जाएगा। वो वहां चलें गंगा घाट, या यही गंगा घाट बढ़िया है। नहीं हो रही? कोई क्वेश्चन? या नहीं, यहीं कंटिन्यू करें या सब एनलाइटेंड हो गए? इस हॉल में गंगा घाट मान लिया तो एनलाइटेंड हो ही गए, कोई रेस्ट्रिक्शन रही नहीं। हमारे हैदराबाद में तो एक मूसी नदी है, सबसे गंदी नदी दुनिया की। गुरुजी, लास्ट ईयर मैं ऋषिकेश आया था गुरुजी, और ये साल भी आया हूँ मैं, और कंटिन्यू 1 ईयर से मैं आपके यूट्यूब पे सुनता हूँ, और टाइम होने से मैं गुरुवार को भी आता हूँ, संडे भी आता हूँ। काफ़ी बार मुझे ऐसा लगता है ऑफिस में, घर पे, कभी हॉट डिस्कशंस हो जाते हैं स्टाफ से, और काम की वजह से कुछ बोल देते हैं अपन, तो उसका ऐसा फील होता है कि जब तो बोल देते हैं जब समय पे, और बाद में फील होता है यार वो बहुत नेगेटिव फील करेगा, नेगेटिव एनर्जी वाइब्रेट करेगा, क्योंकि आप वो समझा दिए कि भाई दोस्त नेगेटिव एनर्जीज, तो हाउ टू ओवरकम दैट? सुशील जी आंसर देंगे, ये इस दौर से गुजर चुके हैं। वो आपके जैसे ही हैं, सेम नेचर, एंग्रॉस्ड इन बिजनेस। पहले बहुत गुस्सेल, इगोइस्टिक थे, हर एम्प्लॉय को बुरा भला चिढ़ना, गुस्सा करना बहुत था, कूट कूट के भरा हुआ था। अब तो खैर बेचारों को ढूंढना पड़ता है कि गुस्सा होता क्या है। I mean, he can share his experience. प्रणाम गुरुजी। यही है, मैं आपको रिफर कर रहा था, वो रवि सराय वाला आपको शाम को बता रहा था, यही है वो बंदा। राइट। जब पहले हम बात करते थे तो अपनी जबान पे कंट्रोल नहीं रहता था, ऐसा लगता था कि सामने वाले को कंडम करना है तो इंसल्ट करने के जितने वर्ड्स यूज़ कर सकते थे करने की कोशिश करते थे, और नीचा दिखाने के हिसाब से कह लीजिए, उसको डाउन करने के हिसाब से हर तरह की कोशिश जारी रहती थी, और शायद रिग्रेट भी नहीं होता था। फिर ऐसा लगने लग गया कि भी आज अगर जो कोई मुझे ही इस तरह से गाली गलौज करे, इंसल्ट करे, तो मुझे कैसा लगेगा। तो कुछ समय से जब से आपने हमारा मार्गदर्शन किया, महसूस होने लग गया। अब जब भी हम किसी की तरफ देखते हैं कुछ कहने के लिए, तो ये देखते हैं कि मैं सामने खड़ा हूँ, अगर जो मैं अपने आप को गाली दूंगा शीशे में देख के ही सही, तो क्या कहूँगा अपने आप को। नाराज होने के भी रास्ते होते हैं, ड्राइवर ने गलती करी, कुछ भी किया, उसको ये बोल सकते तू नालायक है, तू बेवकूफ़ है, तो जो भी है व्हाटएवर वर्ड्स इंसल्ट भी कर सकते, उसके लिए ये बोल सकते यार ऐसा मत कर यार प्लीज़, ये गलती हो गई ना यार, ऐसा करने से नुकसान होएगा ना, हाँ आपको भी तकलीफ होगी, मुझे भी तकलीफ होगी, ऐसा क्यों करते हो भाई। प्यार से भी बात को कह सकते हैं। तो मैंने अब जब भी अपने कोई शब्द यूज़ करता हूँ, मैं अपने आप को दूसरे में देखता हूँ, फिर कुछ कहने की कोशिश करता हूँ, तो सारे भाव बदल जाते हैं, शब्द बदल जाते हैं। वेरी गुड। द मोस्ट इफेक्टिव एंड द सिंपलेस्ट टेक्निक कि लोगों से कैसे अच्छे बात करें, अपने आप को उसमें देखो
और हमको कोई गुस्सा करे तो हमको कैसा लगेगा, वैसे ही उसको लग रहा है। वैसे कोई मिरर के सामने खड़ा होकर के गाली देने की कोशिश करो, चलो देखते हैं ना। नहीं तू गधा है बोल करके देखो मिरर में खड़ा करके। दो गालियां भी नहीं दे पाओगे, मुंह मोड़ लोगे या बोल करके मुंह मोड़ लोगे। तो ये बेस्ट तरीका है। ये अपने आप को उसमें देखिए और सही में आप अच्छे तरीके से समझा करके किसी भी एम्प्लॉय को कुछ कहिए, उसका इम्पैक्ट 10 गुना ज़्यादा है बनिस्पत के चिल्ला करके बोलने में, गुस्से में बोलने में। क्योंकि एक तो गुस्से में हम गुस्से में कभी भी जो बोलना चाहते हैं वो नहीं बोलते हैं। गुस्से में 90% बातें जो नहीं बोलनी होती है वो बोलते हैं। माइंड हड़बड़ाया हुआ है, अपसेट है, बात वो लेगा जो बोलना चाहता है, उसके बाद में वो, जैसे वो आज विक्की वो प्रीति ने नमक से शुरू हुआ, माँ बाप तक बात पहुंच गई। वो बात ही नहीं थी, बात तो नमक की थी, पहुंच गई ना। वैसे ही हम गुस्से में कुछ भी बोलते हैं, अनशंट बोलते हैं, उसका इफेक्ट नहीं होता है। और एम्प्लॉयज भी समझते हैं ये अपने घर का प्रेशर हमारे ऊपर निकालते हैं, ये ऐसे ही चिल्लाते रहते हैं। ऐसे लोग सोचते हैं मन में, हमारे सामने नहीं बोलते हैं लेकिन ऐसे सोचते हैं ये और किसी का गुस्सा, घर का प्रेशर, बीवी से सुबह डांट खा के आए होंगे, हमको डांट रहे हैं। कोर्ट में बोलते हैं ना, जब जज उल्टा सीधा जजमेंट देता है तो लोग बोलते हैं घर में झगड़ा करके आया है वो। तो इसलिए हम हमारा इंप्रेशन खराब कर रहे हैं। गुस्से में आता है, पहली बात जब आपको गुस्सा आता है ऑफिस में, उस टाइम एक प्रैक्टिस कर लीजिए कि उस टाइम में उस सब्जेक्ट पर उस एम्प्लॉय से बात नहीं करनी है। उसको बोलो तुम जाओ तुम्हारी जगह में बैठो, बाद में बात करेंगे। आप 10 मिनट, आधा घंटा, 2 घंटे टाइम लीजिए। जब आपका माइंड शांत हो जाए, माइंड को किसी न किसी चीज़ में डाइवर्ट कीजिए। गर्लफ्रेंड से बात कर लीजिए, जल्दी डाइवर्ट हो जाएगा। माइंड को शांत कीजिए। जब माइंड थोड़ा सा प्रसन्न हो जाएगा फिर बुलाइए। आपकी टोन, आपकी लैंग्वेज, आपके वर्ड्स सब बदले हुए होंगे और उसका जो इम्पैक्ट होगा वो गुस्से में बोलने पर इम्पैक्ट नहीं होता था। अब वो आपके लिए जान देने के लिए तैयार हो जाएगा। और आप, अगर आपने रियलाइज किया है कभी, जिस एम्प्लॉय को आप डांटते हो बार बार, वो गलती करता है, डांटते हो, सालों से वो गलती करता आ रहा है, सालों से आप डांटते आ रहे हो, वो नहीं बदला है। कई एम्प्लॉयज तो ऐसे डीड होते हैं, साहब डांटते हैं ना, डांटने दो, मैं फिर करूंगा, क्या करेंगे देखता हूं, निकालेंगे ना, निकालने दो। आज तो हमारे बच्चे भी बोलते हैं, माँ बाप डांटते हैं, क्या करोगे आप, मैं करूंगा, ये घर से निकाल दोगे ना, निकाल दो। डर आपको रहता है, वो एम्प्लॉय चला जाएगा तो डर आपको है, उसको नहीं है। तो ये डांट को रिप्लेस कर करके अच्छे तरीके से, हाँ कभी गलती की तो थोड़ा स्ट्रॉन्ग वर्ड्स यूज किया जा सकता है, बट विल फुल कंट्रोल ऑन योर सेल्फ एंड देन स्पीक आउट, इट विल हैव मोर इम्पैक्ट। प्रणाम गुरुजी। गुरुजी बहुत नेगेटिविटी सोचते हैं। यहाँ है क्या? नहीं, वो आते ही नहीं। वो ये कहते हैं जैसे हमारे पास कोई ड्राइवर, जितना बोलना है बोलिए। हमारे पास ना कोई ड्राइवर नहीं, हम कितनी कोशिश करते हैं, ड्राइवर नहीं दिखता, तो कहते हैं पता नहीं मेरा नसीब ही खराब है। मैं कहा नसीब को क्यों दोष देते, हो सकता है इसमें हमारा कोई भला हो। फिर कभी कोई बात, जैसे एक बार उनका स्पेक्स कहीं रह गया, फोन पर कहते मैं कहा तो रह गया तो आ जाएगा, नहीं मिला तो कोई बात नहीं, बस तुम्हें तो ऐसे ही लगा रहता है। बाई चांस कोई एम्प्लॉय नहीं आया, क्या हुआ, मेरा काम रह गया, दूसरा कर देगा। वो मेरी शक्ल देखते कि मैं क्या बोलूँ, मैं कहती हूँ नेगेटिविटी को छोड़ो, पॉजिटिविटी में आओ। बच्चों की प्रॉब्लम हुई, बच्चों ने कुछ कह दिया, उसको लेके सारा दिन बोलते रहेंगे, मैं कहा इतना मत बोलो, बच्चों को इतना मत बोलो, अपनी वाइब्रेशन लग जाती हैं। बस तुम्हें तो यही लगता है मेरे को, मैं क्या बेवकूफ़ हूँ, मुझे समझ नहीं आती है। मैं उनको कितना कोशिश करती हूँ। और वही आत्मा की बात करो, क्या आत्मा होती है, अब मैं उनको कैसे समझाऊँ। मैं कई बार तो मेरी शक्ल देखते हैं कि क्या जवाब देगी मुझे, मैं चुप रहती हूँ, मैं क्या जवाब दूँ। मेट्स की प्रॉब्लम हो, एम्प्लॉयज़ की प्रॉब्लम हो, हमेशा फर्स्ट वक्त वो नेगेटिव ही बोलते हैं। मैं उनको कैसे समझाऊँ कि नेगेटिविटी अपने लिए ही है, किसी और के लिए नहीं है।
बेटी की प्रॉब्लम हो, किसी की प्रॉब्लम पे पहला शब्द उनका उल्टा ही निकलता है। मैं उनको यही बोलती हूँ, आप पहले नेगेटिव क्यों सोच लेते हो? इसको आप पॉजिटिव भी तो सोच सकते हो कि ये चीज़ ऐसे नहीं ऐसे होगी। बच्चे तो सभी के खराब होते हैं, अच्छे किसके हैं? किसी का बच्चा श्रवण कुमार नहीं है। नहीं नहीं, बच्चे किसी का श्रवण कुमार नहीं निकला तो हमारा कैसे निकल जाएगा? हमें अपने लिए सोचना, हम क्यों उनको ऐसे बोलते रहते 24 घंटे? अब उनको मैं कैसे समझाऊं, मुझे नहीं समझ आता। आप बताइए कोई रास्ता मुझे। साल के पहले मेरा एक बॉम्बे में प्रोग्राम था, सेम आपका ही कोई दूसरा रूप हस्बैंड के लिए। तो मैंने उसको कहा कि देखिए आप थोड़ा सा हस्बैंड को एक्स्ट्रा प्यार करके देखिए। उसने कहा वो कर लिया, नहीं सुधरा। मैंने कहा थोड़ा क्षमा याचना कर लीजिए, बोले वो भी कर ली, नहीं सुधरा। मैंने कहा थोड़ा सा बच्चों को मीडिएटर बना करके बच्चों के थ्रू उनको बुलवाने की कोशिश कीजिए, शायद मान ले। बोले वो भी ट्राई कर लिया, नहीं सुधरा वो। मैं जो भी सॉल्यूशन दे रहा हूँ बोल रही है वो ट्राई कर लिया, नहीं सुधरा। मैंने कहा मेरे पास तो एक ही सॉल्यूशन है, घर जाइए, डंडा लीजिए, मारिए उसको। तो आपका कहने का मतलब आपके पास कोई सॉल्यूशन नहीं है। कुछ ऐसा करें ना नेक्स्ट टाइम में वो आपसे मिल ही ले, बात ही खत्म हुई, मेरी टेंशन ही खत्म हुई। और क्या बोले? वो नेगेटिविटी में इतना क्यों जाते हैं? पहले पॉजिटिव में क्यों नहीं सोचते? जो हुआ है, अगर ड्राइवर नहीं टिका तो इसमें हमारा कोई भला होगा ना। हो सकता है भगवान नहीं चाहता कि तुम्हें क्या पता, सारा दिन मैं भागता फिरता हूँ, तुम तो घर में रहते हो, है तुम्हें तो ऐसे लगता है। अच्छा मैं अच्छा कोई रख लो, हाँ हर किसी को रख लूँ मैं किसी तरह। तो मैं क्या कह सकती हूँ? मैं तो आपके हाँ में हामी ला रही हूँ, भी रख लो, नहीं रखना मत रखो। तो कोई तो सोल्यूशन होगा। सॉल्यूशन तो है ऐसा। तो थोड़ा टिप्स आप दे दे जिससे कि उनकी नेगेटिविटी खत्म, मुझे उससे कोई इतना नेगेटिव छोड़ दे। नहीं, कोशिश तो करेंगे, बट अगले जन्म में गारंटी है। अभी तो इसी जन्म में तो हाँ ये बात भी है। मैंने कल कहानी सुनाई थी ना, सुअर की कीचड़ में लथपथ लेटा हुआ था। आप थे क्या वहाँ? नहीं मैं भी थी वहाँ पर जब आप सुना रहे थे। कीचड़ में लेटा हुआ लथपथ सुअर। तो नारद जी आते हैं, बोलते हैं अरे बेचारा देखो कितना कीचड़ में लेटा हुआ दुख पा रहा है, कितनी तकलीफ हो रही है, कीचड़ कितना गंदा है, ये जीव क्यों इस गंदगी में पड़ा हुआ है। तो नारद जी कहते हैं कि ये सुअर, मेरी दृष्टि तुझ पर पड़ी है, चल स्वर्ग लेके चलता हूँ। सुअर बोलता है चलो। थोड़ी दूर जाने के पश्चात नारद जी से पूछता है कि नारद जी स्वर्ग में कीचड़ होगा ना? तो कई लोगों को इस प्रकार की नेगेटिव नेचर में बड़ा सुख मिलता है। उनके नेचर में ही नेगेटिविटी समाई हुई है। वही कह रहा हूं मैं, सुअर के जैसे वो कीचड़ में ही सुख ढूंढ लेते हैं कई लोग। नहीं सोचे ऐसे नहीं होना चाहिए। नहीं, मुझे गलत मत लीजिए। अब जैसे कई हस्बैंड होते हैं सुअर के जैसे, वो है यहाँ पर भी है। अब जैसे मैं यहाँ पर आई हूँ, वो घर पे नहीं पूछा क्यों जा रही है, यहाँ पे आके पूछ रहे वैसे एक बात बता, तू गई क्यों है वहाँ पर? मैंने कहा ऐसे ही ऋषिकेश है, घूमने आई हूँ, प्रवचन है, ऐसे ऐसे गंगा आरती सब। हाँ हाँ बहुत अच्छा, करो करो अच्छी बात है। तो बिटिया का फोन आया, अब डैडी को भी ले जाते हैं अपने साथ। मैं कहा बेटा मैं ही आगे बहुत है। यहाँ के डैडी कहते यहाँ क्यों आई तू, चल कर वापस। वैसे बहुत पूजा पाठ करते हैं, बहुत मंत्रों का जाप करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। उज्जैन भी जाएंगे, महाकुंभ भी जाएंगे, सब कुछ करते हैं, बहुत ईश्वर पर विश्वास रखते हैं। मतलब उनका है कि बिना वो माला जपे खाना नहीं खाऊंगा, पर फिर भी वो नेगेटिविटी में जाते हैं। ये उन सब लोगों की प्रॉब्लम है जो उज्जैन जाते हैं, जो मंत्र जाप करते हैं, जो तंत्र जाप करते हैं, क्योंकि वो पत्थरों में सुख ढूंढते हैं। मैं कहती हूँ आप पूजा से उठे हो और उठते आपने ऐसी बात क्यों बोली? आप अच्छी बात बोलो ना, पूजा से उठे हो, हमेशा शब्द अच्छा बोलो। बस तुझे मेरी प्रॉब्लम नजर ही नहीं आ रही। हमारे एक गुरुजी हैं, वो कहते हैं कि लोग वहाँ मंदिरों में जाकर के पत्थर की मूर्ति पर अपना माथा फोड़ते हैं
अरे यहाँ चेतना के पास आकर के माथा फोड़, कम से कम चेतना कुछ बोलेगी तो सही, कुछ आशीर्वाद तो देगी, पूछेगी कैसे हो, क्या हो, खाया पिया नहीं। वो पत्थर की मूर्ति क्या करेगी, केवल सिर फोड़ेगी। तो ये अक्सर लोगों के साथ में होता है, जो पत्थरों से सिर फोड़ते हैं वो अपना सिर वहीं फोड़ते हैं और वो फूटा हुआ सिर लेकर के घर में आते हैं और घर वालों का सिर फोड़ते हैं। और जो चेतना के पास जाके अपना सिर फोड़ता है वो इवॉल्व हो जाता है। वैसे बहुत अच्छे लोग, बहुत लोगों का काम करते हैं, बड़ी वो करते हैं, सोशल वर्क करते हैं, बहुत ऐसे काम करते हैं, नौकरियां लगवाना, लोगों की दुखियों की मदद करना। उनकी प्रॉब्लम आपसे है या बच्चों से है या अपने बिजनेस से? किसी से नहीं, उनके वो नेगेटिव में पहले जाते हैं। उनको किसी लेकिन प्रॉब्लम आपसे भी तो कुछ होगी। प्रॉब्लम मेरे से कुछ भी नहीं है, मेरे से क्या प्रॉब्लम? आपसे प्यार करते हैं क्या? बहुत। अच्छा, बहुत प्यार करते हैं। हाँ, ये एक शकुन ला सकती है, शकुन की हो गया प्रॉब्लम सॉल्व। आप उसके पास बैठ के बात कीजिए ना, तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। यहाँ एक बार लाने की आवश्यकता है। वो महेश जो अभी खड़ा होकर आधा घंटा भाषण दिया ना, उसको भी उसकी पत्नी ने जबरदस्ती लाया लास्ट ईयर। और वो दिल्ली से ऋषिकेश बाई रोड आए थे, 8 घंटे लगे। सारा 8 घंटा बेचारा वो आशा को कुट 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 8 घंटे लग रहे हैं, इतना बेकार रोड है, ट्रैफिक ऐसी है, ऋषिकेश मैं कभी नहीं आता, तुम्हारे कारण आया हूं, मैं अगली बार नहीं आऊंगा, ऋषिकेश पहुंचते ही वापस हैदराबाद चलेंगे। उसने बेचारी ने सुन ली 8 घंटे तक उसकी कुट 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 कुट। यहाँ 3 दिन रहा, अब तो वो पूरे 365 दिन ही रहना चाहता है। वो एक बार कैसे भी जबरदस्ती शकुन के थ्रू और किसी के थ्रू पुलिस में कंप्लेंट करके एक उनकी तो पुलिस में इतनी जान पहचान है, पुलिस वाले उनकी सुनते हैं। अरे हमारे और जान पहचान है, आपको होम मिनिस्टर से मिलवा देते हैं यहाँ पे। वो होम मिनिस्टर को भी जानते हैं, मोदी जी से मिला देते हैं, उसमें क्या है। तो हो जाएगा, थोड़ा समय लगता है। हाँ, आप एक तरीका बताता हूँ कि उनको ज्ञान देने से वो नहीं सुधरेंगे। पहली बात तो खासकर पत्नी जब ज्ञान देती है तो पति उसको कभी भी एक्सेप्ट नहीं करता, मेल ईगो बीच में आ जाता है। इसके लिए हम कभी भी पत्नियों को नहीं कहते हैं कि अपने पतियों को ज्ञान दो। कितना भी अच्छा आप ज्ञान दो, मेल ईगो बीच में आ जाता है। तो पति को कभी ज्ञान मत दीजिए। नंबर 1, आज से ज्ञान देना बंद कर दीजिए। अगर उनको नेगेटिविटी बातें अच्छी लगती है, आप उस यज्ञ में थोड़ा घी डालिए। सही कहा आपने, ऐसे सही कहा आपने, वो ऐसे हैं, वो ऐसे हैं। आप भी नेगेटिव बातें करने शुरू कर दीजिए। बच्चे ऐसे, बच्चे वैसे हैं। मुझे किसी ने एक बार बोला था, गुरुजी क्या करूं, मेरे डैडी बहुत नेगेटिव है मेरे अगेंस्ट में, रोज बोलते रहते हैं कि तेरे में अक्ल नहीं है, तेरे में वो नहीं है, रोज लोगों के सामने भी। तो मैंने उसको एक अच्छी टेक्निक दी। मैंने कहा अगली बार ऐसे बोले ना तो सबके सामने बोलना कि पापा क्या करूं, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है। और वो तो मेरी गलती नहीं है, मेरा स्क्रू ढीला है, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, मैं तो ऐसा ही हूँ, मेरे में अक्ल नहीं है, मैं बेवकूफ़ हूँ, मैं गधा हूँ, मैं सोच नहीं सकता आपके जैसे, आप तो डायनामिक हो, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। उसने जाके बोला तो अगले दिन बहुत खुश था। मैंने पूछा क्या हुआ? बोले ऐसे मैंने बोला जैसे आपने बोला। तो फिर पापा ने बोला नहीं नहीं बेटा, तो इतना भी बुरा नहीं है। ये भी एक तरीका होता है। कई बार किसी को रोकने से नहीं रुकता है। वो यज्ञ में घी डालिए, आग में घी डालते जाइए। तो बोले कि तुम क्यों नेगेटिव बातें कर रही हो? आप भी कल से, हमारे एक डॉक्टर हैं, फैमिली डॉक्टर, उनके पास में एक लेडी आई। उसने कहा मेरे हस्बैंड बहुत ड्रिंक्स लेते हैं, कैसे छुड़ाऊं? उसने तरीके बताए, उसने सब ट्राई कर लिया, बोले वो नहीं छोड़ते हैं, मुझे सहन नहीं होता है। उसने कहा मेरे पास में एक ही उपाय है, तुम भी ड्रिंक करना शुरू कर दो। ये खाली एक नाटक के तौर पर कह रहे हैं। किसी को रियलाइज करवाना हो तो कई बार जैसे हीरा हीरे को काटता है, वैसे आप देखिए कि आप अगर नेगेटिव करने शुरू कर दें बातें, शायद उनको एक चेंज लगेगा नाटक के तौर पर। अरे तुम क्यों नेगेटिव बातें कर रही हो? आपसे ही सीखा है। मुझे लग रहा है कि शायद क्योंकि आप तो हरदम सच होते हो, आप तो ठीक होते हो, आप तो सोच अच्छी है, आप जो करते हो, जैसे सोचते हो, जैसे बोलते हो, सही बोलते हो, तो मैंने यही अपना लिया है। अब कहीं ना कहीं शायद स्ट्राइक कर जाए, कहीं ना कहीं स्ट्राइक कर जाए। अगर पत्नी पीना शुरू कर देना तो पति बहुत जल्दी छोड़ दे। पति रोकने को कहे, शराब पीने के लिए रोके तो नहीं छोड़ेगा।
पीना शुरू कर देना, छोड़ देगा। वो दूसरी औरत के साथ डांस करता है, आप बैठे बैठे देखते रहो, कुट कुट करते रहो, वो वैसे ही डांस करता रहेगा। आप दूसरे मर्द के साथ में जाके डांस करना शुरू कर दीजिए, वो छोड़ देगा उसको। अरे रिकॉर्ड मत करना यार, ये सब ये प्राइवेट है ये। थैंक यू गुरुजी। ये भी एक स्किट हो गया आज का। जैसे इनका एग्जाम्पल, अगर वो कर रहे हैं तो थोड़ा सा वैसे करो तो वो करना बंद कर देंगे। नहीं, हर एक के लिए नहीं है, मैं इनके लिए बता रहा हूँ, आपके लिए नहीं है वो। नहीं, ये मेरे कंट्रोल में, इसलिए मैंने इनको कहा है। अगर एंगर का हो तब क्या करना चाहिए? अगर सामने वाले में एंगर बहुत है, किसी में एंगर बहुत है, ये नहीं कि वो मेरे से स्पेसिफिकली मेरे से एंग्री है, बट बाय नेचर सर्वेंट है, अगर पानी का ग्लास रख रहे हैं तो ऐसे क्यों नहीं, वो बचपन से देखा है उनमें गुस्सा है, एंड सो मोस्ट ऑफ द टाइम यू कैन हैंडल इट। बट किसी वक्त ये डर लगता है कि अगर बिना वजह अगली बार फिर कोई गुस्सा करेगा तो फिर अपने मुंह से भी कुछ निकल ही आएगा, तो उससे अच्छा थोड़ा सा डिस्टेंस रखें। या देन आई फील हम डिस्टेंस रखेंगे तो वो अकेले हो जाएंगे, अलोन हो जाएंगे, बिकॉज काफ़ी लोगों ने और उनसे डिस्टेंस रख लिया है, एंड आई एम द ओनली पर्सन हु इज इन टच विद हिम, सो आई काइंड ऑफ फील बैड फॉर हिम, बट देन आई फील यू डोंट हैव टू बी अ पंचिंग बैग फॉर 25-30 years also. So what should be the reaction for that anger? नहीं हैंडल होता समटाइम्स। टाइम पर, काल पर, उनके भाग्य पर छोड़ दीजिए। कई बार हमारे हाथ में कई चीज़ें नहीं होती है तो नहीं होती है। देन जस्ट लीव इट एट द डेस्टिनी, मेक प्रेयर्स एंड फॉरगेट। एक काम इतना ही कर सकते हैं कि हमारे पास एक विजुअलाइजेशन टेक्निक है। जैसे मैं इनको भी कह रहा था कि आप और कुछ नहीं तो एक विजुलाइज कीजिए कि हस्बैंड पॉजिटिव बातें करने लग गए, विजुलाइज कीजिए कि हस्बैंड बहुत लविंग केयरिंग तो है ही है, बट जो उनमें वीकनेस थी, हस्बैंड फादर, नो आई एम टेलिंग हर, तो वैसे ही आपको कह रहा हूँ कि आप उस व्यक्ति के लिए विजुलाइज कीजिए कि उनका गुस्सा शांत हो गया, आजकल प्यार कर रहे हैं, आजकल बहुत आराम से बात कर रहे हैं। कहीं ना कहीं कभी ना कभी जा करके आपकी वाइब्रेटरी इफेक्ट इन्फ्लुएंस करेगी और उनमें एक चेंजेस दिखेगा आप में ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। बट माइंड यू, डोंट मॉनिटर योर विजुअलाइजेशन, जस्ट डू इट, मेक ए प्रेयर एंड फॉरगेट इट। मॉनिटर करोगे तो आप डिसअपॉइंट हो जाओगे, अभी तक चेंज नहीं हुआ, विजुअलाइजेशन काम कर रहा है नहीं कर रहा है, ऐसे सोचेंगे हम। जस्ट डू इट एंड फॉरगेट। जहां आपके पास और कुछ करने के लिए नहीं है तो आप ये कर सकते हो और ये करके छोड़ दीजिए। Is it okay once to express to them कि ऐसा नहीं है that I don't want to be there, I love to be there, but it's just the anger that makes me. Occasionally you can do it. उसका कुछ इन्फ्लुएंस होता है, इफेक्ट होता है तो कीजिए। और आपने 100 बार एक्सप्रेस किया और उसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा है तो भूल जाइए, कोई उपाय नहीं है। Thank you. But I just want to quench my thirst out of curiosity that it is like 20 years ago I was sleeping at your home with Ashish on my left and Appu on my right side. And who on the right side? Appu, Aryant. So it was like 20 years ago, I was 13 or 14 years of age. And I heard some dham, dham, dham ki voice. So I checked with Ashish or Appu that what is it, what is the noise coming from? So they said, I mean, I have heard that there are some tremors coming in Jubilee Hills area and so on. So, but they said, I suppose that Papa Ji is in meditation. Yeah. So I slept and then suddenly I woke up with my eyes widened up. So I thought that meditation, what we have heard or seen, like Lord Mahavira, Lord Buddha, that meditation is very subtle, soft kind of practice. And why is this dham 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 sound? So you were there when Mahavira was meditating? No, not really, but I have seen in the pictures, right? So he was. Those pictures also are, those people who have drawn those pictures were not present. Okay. And there were no cameras, I suppose, in those days. Mm-hmm. They are all drawn by some artist. Anyway, in lighter vein. हाँ, ये हमारे साथ होता था. See, normal people who do normal meditation is very soft and subtle, जैसे हम करवाते हैं यहाँ पर. But what I was practicing was very intense Hatha Yoga. And in Hatha Yoga, it was Kundalini Yoga. And in Kundalini Yoga,
there are a lot of tremors takes place in the body after a level of meditation. And what he is experiencing, he is my cousin brother's son. So मैं जब ध्यान करता था फर्स्ट फ्लोर में, तो 3-4 घंटे के बाद में my body used to levitate. It will, I am sitting in Padmasana. Sitting in Padmasana, nobody can jump on their own. तो 3-4 घंटे के मेडिटेशन के बाद में my body will just jump up 2 feet, 3 feet, and it will fall down. It will jump, it will fall, it will jump, it will fall. So I used to keep a very thick cotton bed below me, beneath me. तो वो उस प्रोसेस में वो होता ही होता है, वो जो प्रोसेस मैं फॉलो कर रहा था, उस प्रोसेस में हमारा प्राण रुक जाता था. माय ब्रेथ विल स्टॉप बिकॉज टू रेज द कुंडलिनी आई हैड टू डू लॉट ऑफ इंटेंस प्राणायाम. सो ब्रेथ जब रुक जाता है तब बॉडी एंटी ग्रेविटेशनल फोर्स क्रिएट करती है. तो एंटी ग्रेविटेशनल फोर्स में बॉडी ऊपर उठती है. जैसे मैं कल बता रहा था कि गैस बलून होता है, तो गैस बलून कहाँ जाता है? ऊपर जाने की कोशिश करता है. सो जब प्राण रोक लेते हैं हम काफ़ी देर तक, मेरा प्राणायाम खैर बहुत डिफरेंट और इंटेंस होता था. सो जब इतना प्राण रुक जाता था तो वो गैस के जैसे हो जाता था. बॉडी विल जंप, बॉडी विल राइज अबव द ग्राउंड. But after a level, again the gravitational force will pull back the body. तो इस पुल एंड पुश चक्कर में बॉडी बहुत उछलता था वो. तो नीचे जो ग्राउंड फ्लोर पे रोक देते थे, उनको लगता था कि ऊपर 10 लोग फर्स्ट फ्लोर पर जंप कर रहे हैं. आई थिंक यू वुड हैव हर्ड सच ए साउंड दैट कपल ऑफ पीपल मस्ट बी जंपिंग, और दोज रॉक ब्लास्टिंग और ट्रेमर्स काइंड ऑफ थिंग्स. सो दैट यूज्ड टू हैपन इन दैट प्रोसेस ऑफ my spiritual sadhana. It is not for everyone. I'd heard you speak about Shama Yachana, and I noticed that every time I practiced it, the feelings of anger or frustration I felt towards anybody who I perceived was the cause of any emotions arising in me, they would just slip away. Very true. But I'm afraid I'm still trying. I sometimes tend to brood on past hurts and forgetting to practice the Shama Yachana. But I would like to tell you how effective it has been for me, and hopefully I will improve. Sure, please do it. It's one of the most effective technique to release your negativity, to protect yourself from others' negative vibrations. और वो मुझे अभी रिसेंटली मिले थे काफ़ी टाइम बाद. तो उन्होंने मुझसे बताया एक वो 6-7 साल वो हिमालयाज़ में मेडिटेशन करके आए हैं, और उस मेडिटेशन में वो वापस घर आए हैं, और उन्होंने आने के बाद इतनी ज़्यादा वो तपस्या की है कि वो मूर्ति की पूजा कर रहे थे तो उसमें से सांप निकलने लगे. उनके पास मतलब वीडियो रिकॉर्डिंग है उनके घर की. और प्लस वो बोल रहे थे कि जब वो मेडिटेशन कर रहे थे तो बोले कि उनके पूरे चक्रस खुल गए थे, पर जब यहाँ पर आए वो मोक्ष जब ये खुलने का हुआ तो बोले कि शिव भगवान जो थे उनकी प्रेयर करते थे वो. तो फिर शिव भगवान ने उनसे कहा, वो बात करते हैं, वो बताते हैं कृष्ण भगवान से, शिव भगवान से. तो उन्होंने कहा कि फिर शिव भगवान ने बोला कि मैं सिर्फ यहाँ तक लेके जा सकता हूँ, इसके ऊपर अब सिर्फ श्री कृष्ण ही लेकर जा सकते हैं मोक्ष के द्वार पे, इससे आगे मैं नहीं लेकर जा सकते. ऐसा कुछ है? आपके सत्संग में आते हैं क्या वो? नहीं, हमारे सत्संग में नहीं आते. ऐसा कुछ नहीं. ऐसा कुछ नहीं है. Very old man and he is doing research on oxygen and everything. सब अपने अपने मेंटल कंडीशंस, इम्प्रेशन. पहली बात तो न तो कोई शिव को टाइम है बात करने के लिए, और नहीं हमारा टाइम स्केल उनके टाइम स्केल से मैच करता है. वो बेचारे समाधि में होते हैं, जब समाधि खुलती है तब तक तो कई युग बीत जाते हैं. तो ये जो हम फील करते हैं ना कि वो मैंने बात की, उस स्टेट में गया, वहाँ उन्होंने ऐसा कहा, ये सारा का सारा खुद का स्वयं का मेंटल प्रोजेक्शन होता है. ये कहीं ना कहीं डीप रूटेड सबकॉन्शियस इम्प्रेशंस, कई बातें सत्संग में सुनी हुई
तो कौन सी बात कहाँ कहाँ सबकॉन्शियस माइंड में किस किस कोने में वो इम्प्रेशंस उन्होंने क्रिएट कर ली, उनको खुद को भी पता नहीं है। वो साधना के समय वो प्रोजेक्ट होते हैं वो। तो ये उनका ही माइंड का प्रोजेक्शन है जो ये एक्सपीरियंस हमारे साथ में शेयर कर रहे हैं। हमने भी इतना इंटेंस साधना किया तो हमने कभी नहीं कहा कि वो भगवान कृष्ण से बात हुई या शिव से बात हुई, मेरी तो हॉटलाइन मिली हुई है उनसे, ऐसा कुछ नहीं है। ये हमारा ही एक इम्प्रेशन है, वो प्रोजेक्शन है वो। यहाँ जो भी हम कुंडलिनी की बात करते हैं या शिव की बात करते हैं, वो शिव का अर्थ वो नहीं है कि वो जो जटाधारी है, जो गंगा को धारण किए हुए हैं, जो नीलकंठ है, जो हाथ में डमरू त्रिशूल लेके बैठे हैं, वो शिव नहीं है। यहाँ शिव का अर्थ है शून्य, प्योर शून्य, उसको शिव कहा गया है। तो शिव क्या बात करेगा, शून्य क्या बात करेगा? आप तो उसमें मर्ज होने वाले हो। वो शून्य में न कृष्ण है, न शिव है, न राम है, कोई नहीं है। वो शून्य बियॉन्ड फॉर्म है, वो वहाँ फॉर्म ही नहीं है। तो जहाँ जहाँ फॉर्म की बात होती है, जहाँ जहाँ हम इस भगवान से बातचीत करते हैं, वो सारा का सारा उनका स्वयं का खुद का मेंटल प्रोजेक्शन है, उनकी मेंटल कंडीशन और कुछ नहीं है। दो इट्स ए गुड एक्सपीरियंस, दे एंजॉय इट। नो बट वो बोल रहे हैं कि वो भी जमीन से लिफ्ट करके मेडिटेशन, उससे कुछ नहीं होता है। जमीन से लिफ्ट करना ही कोई शिव से बात करना नहीं होता है। ये इंटरमीडिएरी एक एक्सपीरियंस है। ये जमीन से लिफ्ट होना करना, मैंने कभी इसको इंपॉर्टेंस नहीं दिया। ये तो आज वो संदीप ने याद दिला दिया तो मैंने यहाँ बता दिया है, वरना मैंने किसी को बताया नहीं आज तक। मेरे लिए कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है उसकी। जमीन से उठना तो गधा भी उठता है, कोई बड़ी बात नहीं है उसमें। ये इंटरमीडिएट एक्सपीरियंसेस है जो मेडिटेशन में कई तरह से होता है। कई बार एक फ्रॉग, मैं जमीन से ही नहीं उठता था, जमीन से उछल उछल करके कहाँ पहुँच जाता था मुझे ही पता नहीं, बैठता वहाँ था, उठता वहाँ पर था, वो मुझे नहीं पता चलता था। बट दैट इज ऑफ नो सिग्निफिकेंस इन द स्पिरिचुअल साधना। जो कई लोग इसको बहुत सिग्निफिकेंट कहते हैं, वो सिग्निफिकेंस नहीं है उसका, एक एक्सपीरियंस है। सो हैव नो रिलेशनशिप और कंडीशन अबाउट ऑल सच थिंग्स कि इस गॉड से बात हुई, उस गॉड से बात हुई, उन्होंने ये कहा, उन्होंने ये कहा, उसका कोई ज़्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ, हाँ उनका बिलीफ है, वो उसको फॉलो कर रहे हैं। अब उनके ध्यान में कृष्ण भगवान जब आएंगे और आगे ले जाएंगे तो आगे चले जाएंगे। अब भगवान कृष्ण को जब टाइम होगा तब आएंगे, आगे ले जाएंगे उनको। अब आप दिल्ली आएंगे तो आपसे मिलवाऊंगी उनको। नहीं मत बुलाना, मैं कहूँ फिर बेचारे कम से कम वो श्रद्धा तो बनी हुई है कि शिव जी आए कृष्ण ले जाएंगे। मैं तो ध्यान में बैठता तो सबसे पहले कहता था, हे शिव, हे कृष्ण, हे राम, तुम सब साइड में रहो, मुझे जाने दो, बीच में मत आना। ये ऑब्स्ट्रक्शन सही है। ये सब विजन्स जो होते हैं ध्यान में, ये ऑब्स्ट्रक्शंस है अल्टीमेट के लिए। और ये ऑब्स्ट्रक्शन से, ये हर्डल्स से हमको हमारे स्वामी जी ने बचाया। एनलाइटेंड स्वामी जी थे जो मेरे पहले गुरु थे, जिनके सानिध्य में मैं साधना कर रहा था, जो शरीर उड़ता था, उछलता था, और एक्सपीरियंसेस के नाम पर सुपरनेचुरल एक्सपीरियंसेस होते थे। मैं नहीं बताना चाहता, अमेजिंग, अच्छा लगता था, साधना करते थे, ये हो रहा है, वो हो रहा है। जब स्वामी जी के पास में गए, उन्होंने धीरे धीरे मेरा प्राणायाम बंद करा दिया, मेरा ध्यान बंद करवा दिया, मेरा उछलना बंद हो गया। नहीं तो लोगों को पहले कहते थे मैं ऐसे उछलता हूँ, वो संदीप कह रहा है तो उन दिनों में बहुत अच्छा लगता था। और कोई, मुझे पता था कि गेस्ट आए हुए हैं तो जाके ध्यान में बैठ जाता था कि मेरी उछलने की आवाज़ आए तो लोगों को भी पता चले, इज्जत बनती है ना, थोड़ा ईगो सेटिस्फाई होता है। लेकिन स्वामी जी के पास जाने में के बाद में धीरे धीरे उन्होंने सब बंद करवा दिया। और जब सब बंद हो गया, मेरा करना बंद हो गया, जब मेरी साधना बंद हो गई, तब मुझे एनलाइटनमेंट मिला। और जब कर रहा था तब कुछ नहीं मिला, तब केवल और केवल ईगो मिला। करने में ईगो है, नहीं करने में एनलाइटनमेंट है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। थैंक यू। मैं कई साधना करने वाले ये लोग एनीवे बहुत मुश्किल है, एक्सेप्ट नहीं होता है। लेकिन मैं चूंकि दोनों दौर से गुजरा हुआ हूँ, बहुत इंटेंस किया, 24 घंटे में 24 घंटे साधना किया हुआ इंसान, खाना नहीं, खाली पीना, मेरे शरीर का कम से कम 25-30 किलो वजन 1.5 साल में कम हुआ। मैं हिमालय में बर्फ की घाटियों में बैठ करके -20 डिग्रीज में ध्यान करता था। मुझे पूरे कपड़े खोलने पड़ते थे, इतना पसीना, इतनी गर्मी आती थी।
चारों तरफ बर्फ है और अंदर से भयंकर गर्मी आती थी। उस प्रकार की साधना भी किया हुआ, परंतु उस साधना से अचीवमेंट नहीं हुआ, क्योंकि वहां कर रहा था। मैं कर रहा हूं, वो मैं था। एनलाइटेंड गुरु के पास में आए, उन्होंने करना बंद करवाया, तो मैं भी खत्म हो गया। मैं खत्म हो गया तो वो प्रोजेक्ट हो गया। थैंक यू गुरुजी, इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन। Actually sure about my question, but in your talk earlier in the evening, Guruji, you were talking about evolving to enlightenment, and you said there'll be a situation when you are working, but your mind will be totally at peace, at mindless. Yes. Which is what we're all working towards. But when you say that, if you go to work, how can your mind be quiet? I mean, it's working so much sometimes. Whenever the mind is required to think, allow it to think. It should think and come back. And that's it. You should compartmentalize That's no problem. it. That has to happen. If your mind won't think, you will not even wake up from your bed. You will become a dead body. You can't eat, you can't walk. So when the mind is required to think, to that extent it is allowed to think, not beyond that. The problem is, it was used to think for something, for some discussions. Discussions are over, decisions are taken, but mind continuously keeps on thinking, did I take a right decision, wrong decision? Will the guy implement, not implement? Will I incur loss in this, or it will be a correct decision, or whatever such things? That is not allowed. To the extent it is required, allowed, not otherwise. I mean that. Yeah, I knew you would have a very simple thing, but I was just saying, generally, the minute you walk into work, you don't think about anything else. Like I'll say at 11:30, I'll go somewhere. I have to tell my driver to come and remind me sometime, because you start thinking of something or the other, and it just. When I was in business, you know me very well. And our office in that Bashir Bagh area, there were 200 people in the city office, 1,000 people in the factory. When I used to go to office, 9:30, 10:30, 11:30, I would finish off my work. I don't know what to do for next 6 hours. I can't go home before 6 o'clock. She'll not allow. I used to read magazines. I'll sleep on the sofa. I was practicing this, it is possible. Never ever I had any paper, files unattended on my table. Call people, discuss, finish it off, take decision, forget it. And it is out from the mind. Then mind would like to sleep or read or talk to some friend, and this is how I used to pass time. This is the state we should achieve, and it is possible. Practice it. Start delegating. Tell people it is your responsibility. You get back to me whenever it is required. You have created information system. Let people, you don't monitor people. You don't follow up with people. Once you tell somebody to organize these retreats, there are so many people involved. Puneet is one of the key person involved. So much work single-handedly he has done. We also used to get involved. But we will discuss, we will tell, I'll tell him that after 2 days you get back to me, I'll not call you. And I told him that you also do the same thing. You talk to the canteen fellow, you talk to the ashram fellow, you talk to the sound people, give them and tell them to get back to you after 2 days, so that you also don't monitor. Like this we went on delegating, we were at peace. Some similar way of working, if you create, your mind can be at peace. Sushil ji has told me, the problem is, he is working like a worker in his factory. Being the owner, he is working like a worker there. And even workers, managers, supervisors, everybody is using him. Sir, हमारा ये काम भी कर दो, हमारा ये काम भी कर दो. आप चाइना जा रहे हो ना, ये मेरा काम कर दो, ये मेरा काम कर दो. Everybody is using him as a worker. When I was in business,
हमारे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में we used to import lot of materials and export end products. When I appointed purchase manager, materials manager, who knows imports, who has imported crores of worth from China, Japan, Germany, I asked him, where all did you go in the interview? He said, where all means what? I said, which all? You import from where? He said, sir, I import from China, I import from Germany, I import from US, I import from so and so place. I said, how many times you have visited? He said, never. I said, you import so much material, you have never visited? No. When I interviewed my export manager to export my products, he has exported to 20 countries for 10 years. I asked him how many countries you visited. He said, I don't have passport. I said, how do you export? He said, sir, whenever there's an opportunity to meet my customer for exports, my MD will go. And I tell you, during those days, I'm talking of early 90s or so, it was new business, new pharmaceutical industry was coming up. So all these MDs, CEOs, they used to travel. They can't bear 3 lakhs, 4 lakhs expenses for a 20,000 rupees salary guy. Export foreign जाना है तो सेट जाएगा. तुम यहाँ से खाली email करो. Talk to them, fix everything, I'll go and settle. I said, no, I'll not have all this system. Made passports for the purchase manager, made passport for the export manager. Whenever required for business, it is you who will travel. I will only travel for pleasure purpose. And those guys started going around the world. Earlier, export matlab set jana hai. This is what probably Sushil ji is doing. We could send people also, and I find they are much more effective than us. But this is the problem, the delegation or some calculations or mental calculations or conditions. How can a 20,000 rupees, 40,000 rupees person could be spent 5 lakhs for 5 days, 6 days? At least I go in the evening, I can enjoy, spend time in US, in Germany. So if you start delegating, then you can be at peace during office hours also. Next question. Ho gaya, dinner time. Guru Ma is coming with hunter. जाना है यहीं हरिद्वार में, तो बेसिकली मैं उसी के चक्कर में अवॉइड करी थी, बट ये कि आपका मेरा बुलावा यहाँ लिखा था, सुशील जी ने मुझे बहुत फोर्स किया. मैं बहुत गुरुओं से पंगा ले रहा हूँ, बहुत बड़ी प्रॉब्लम. बिल्कुल ले रहे इनके हैं. गुरु से, इनके गुरु से, उनके गुरु से, उनके गुरु से, और वो सब नेगेटिव हो रहे हैं मेरे लिए, क्योंकि उनकी दुकानों से कस्टमर कम हो जा रहे हैं. हाँ जी. तो आपके लिए नेगेटिव वाइब्रेशंस, उनकी श्राप मैं ले रहा हूँ मेरे ऊपर. नहीं गुरुजी, आई थिंक ये हमारी पूर्व कर्मा के कुछ भी कह लीजिए, जो भी है, मुझे ज़्यादा शब्द नहीं आते बोलने, लेकिन मुझे लग रहा है कि जो 2 दिन से मैं कल शाम से ये सुन रही हूँ, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और मुझे लग रहा है मेरे बहुत सारी परतें दिमाग की खुलती जा रही हैं. अच्छा, हमारे यहाँ रिट्रीट में क्या अच्छा लगा आपको? ऐसे कुछ डिफरेंट लगा? डिफरेंट तो सच बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है. वहाँ भी यही टॉक सेशन ही होते हैं हमारे. नहीं, खाली टॉक सेशन नहीं, और जनरली ऐसे. लेकिन गुरुजी यहाँ आके मुझे ये लगा कि जैसे साउंड स्मूथ, एक 1-to-1 हमारी आपस में बातचीत ज़्यादा हो रही है क्लोज एनवायरनमेंट के अंदर, जो वहाँ थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा सम्मेलन के अंदर हम लोग अपने मन की बात नहीं कर पाते हैं. थोड़ा घबराहट होती है और हमें समझ नहीं आता हम कैसे बोले थे पब्लिक के बीच में. यहाँ आपसे मिलके एक तो हमें अपनापन बहुत लगा, कि जैसे बिल्कुल आपने जो बताया कि यू आर डिफरेंट. आप कभी आप गुरुजी हैं तो घर में आप फादर हैं, तो फॉर अस ऑल्सो हमें ऐसा लग रहा है कि यू आर गुरुजी प्लस आर ए वेल विशर whom we can discuss anything, we can talk anything, whatever it is, even a simplest matter we can discuss with you and we'll get back the answer. And that's what I'm really feeling good. And even I have a lot of queries, but I don't have guts to speak right now. Maybe next session I'll have some more questions, and even I would love to bring my husband. This time I lost that opportunity, though he was yesterday in Haridwar only, but because I never knew, so I didn't insist him. But next time I'll surely make that he should be here, and especially that Namak wala instance,
It has really touched my heart because my husband and between us both, only salt is the problem. So. But it has not gone to divorce, no? Thank you, Guruji. Thank you. Really, I'm really highly obliged, Sushil and Shakun, so that, they got me into this session. And thank you, Guruji. Very nice. पुर से आई है, वो कुछ बोलने में सकुचा रही है, इसकी कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम है जो मेरी बात करने से नहीं निकल पा रही है, ये भी सब कुछ समझती है, तो मैं चाहता हूँ कि मेरी बहन कुछ पूछे। दिमाग में मेरी 2 बहू हैं, एक बड़ी बहू बाहर रहती है, छोटी बहू मेरे साथ में है, तो उसका कुछ नेचर ऐसा है जो उसकी शादी को 2 साल हो गए, अभी तक हम दोनों के आपस में ट्यूनिंग जरा भी नहीं हुई है, और 24 घंटे वो मेरे दिमाग से निकलती ही नहीं है, हर वक्त मैं उसके बारे में ही सोचती रहती। यहाँ भी? यहाँ तो नहीं, अभी 2 दिन तो अच्छा लग रहा है बहुत, तो उसका क्या सोल्यूशन कर सकते हैं? कहाँ रहती है वो? नागपुर में रहती हूँ मैं, मेरे साथ में रहती घर पे वो। तो कितना भी अपन ट्यूनिंग की कोशिश करो, हम दोनों का मैच करता ही नहीं है। एक्टिंग यस। आज का सेशन था ना? हाँ। एक्टिंग मैच नहीं होता है तो आप करने की कोशिश कीजिए। हाँ। जैसा वो चाहे, जैसे उसकी पसंद, जो वो करना चाहे, जब उठना चाहे, जब सोना चाहे, सब देते जाइए। एक दिन जरूर आएगा कि वो मैच हो जाएगा। ये महेश समझाता है बहुत, आशा भाभी बहुत समझाती है, आप ऐसे करो, सब कोशिश मैं करती हूँ, पर यहाँ आने के बाद शायद मैं ठीक हो जाऊँ। उसीलिए तो आपको दिखाया था सास बहू की एक्टिंग। हाँ। और जैसे आज बताया था कि वहाँ यूपी में कोई बहू को मैंने कहा था कि सास की तारीफ करो, सुबह सुबह उठ के तारीफ की उसने। आप थे क्या सेशन में? तो यहाँ सास को कहते हैं, बहू की तारीफ शुरू कर दो। क्या बेटा आज क्या स्मार्ट लग रही, क्या बात है, कहीं जाने का चक्कर है? ऐसे एक फ्रेंडलीनेस आना चाहिए रिलेशनशिप में। सास बहू रहोगे तो न वो सुखी रहेगी न आप रहोगे। एक फ्रेंडली हो जाइए, ऐसी बातें कीजिए जो उसके फ्रेंड करती है, वैसी बातें कीजिए। सास बन के मत रहिए, ये करना है वो करना है, उसको बाहर जाना है तो तेरा काम खत्म करके जा, अच्छा जा तू जा, मैं संभाल लूँगी पीछे से। कई ऐसी चीज़ें हो सकती है, छोटी छोटी बातें होगी, आप ध्यान दीजिए। या बेस्ट तरीका है, अगर आपको लगता है कि ट्यूनिंग करनी है और आप तैयार है अपने आप में बदलाव लाने के लिए, उसमें नहीं, अपने आप में, बहू के साथ में कभी लंच पे जाइए, उसको बोलिए चल अपन दोनों लंच पे चलते हैं, वहाँ बैठिए, उसको बोलिए देखिए मेरे को पता है कि मेरे में कुछ कमियां हैं और मैं मेरी कमियों को दूर करना चाहती हूँ, मैं मेरे में इम्प्रूवमेंट लाना चाहती हूँ, तू प्लीज़ नीडर होकर के मुझे बता मेरी कमियां जो तुझे इरिटेट करती है, और मैं कमिट करती हूँ कि मैं तेरी किसी भी बात से नाराज़ नहीं होंगी, उन कमियों को दूर करके दिखाऊंगी और अपने रिलेशनशिप को बहुत मधुर बनाऊंगी। आप इस प्रकार पूछिए, खट 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 पूरी लिस्ट बाहर आ जाएगी। उसके ऊपर वर्क कीजिए, फिर देखिए।